Good morning, everyone, and welcome to the second day of the workshop on trends in data analytics and data science. This is not just another day, this is yet another chance to make your dreams come true. Here's a quick summary of yesterday's session. It was a delightful trip to learn the practical implementation of the NumPy library, which included installation steps, basic operations performed using NumPy, universal functions, aggregate functions, indexing, slicing, and iterating. Then getting an insight into the pandas library, which included installation steps, data structures, reading and writing data, data preparation, data transformation was just amazing. So let's begin our today's session with yet another chance to learn something unique from Sir. Over to you, sir. Yeah, very good morning. Thank you, Sonalika. Thanks everyone for joining. So let's take a recap what we did yesterday. As Sonalika mentioned, we touched based more on understanding NumPy. We tried to understand what is pandas, and based on that, we tried to understand what exactly are the important operations that have been taken into picture. And we tried to understand more that what a data scientist, what a data analytics personality as an individual who works inside a domain or in industry tries to take out of that data, like basic operations. And this is kind of a myth that every person sitting outside says that a data scientist is only responsible for building model, but that is not actually right. Okay, so that we deal with even data, we deal with also sharing each and every aspect. So that's the reason we are over here. Okay. um Please confirm once if my screen is visible. Can we Yes, sir, stop it's visible. Yes, sir. cameras? Yes, Web- sir. Yeah. Okay. Cool. So today we will kickstart on data visualization. So let me tell you very honestly, industry needs data visualizers. Okay, I am telling data visualizers. Why I'm telling data visualizers? Because if we perform all the task well and good. Okay, we perform each and every aspects, we work on it, we create multiple models, but it is of no use if we don't have a communicator who can display or give insights from the from a presentation point of view, or whatever your data speaks, it is done into a visualization format, and then it is being represented. So that is the reason why we need a data visualizer who really comes up with that keen analysis. So let me take a small example. Okay. um, uh, digital media. Okay, so digital media is totally based on ad revenues. Okay, so they play from the point of aspect wherein you want your website to trend, and that website should trend based on the rank that has been generated doing software engine, like search engine optimization on the software basis. So they have tools which will try to optimize the search of your website, so that anybody who comes out, okay, anybody who comes out searches for anything, either they will pop up your website ad. Okay, and if like your website link on the first, which is called using SEO, and if not, then you can pay the organization that they will run some ads around the corner whenever the person searches for example, I have a startup of the data science educational ed tech startup. So I want my classes to get good name. Okay, so I catch upon a digital marketing expert, or say digital expert, and I'll tell him that please suggest me some ideas so that I can get a name in the market, and people should know about my organization that I have. So he, as a digital marketing expert, he will just suggest me either I should go using pamphlets. Okay, I print pamphlets and I allocate some person to go in areas wherein he can just
pop out and give the pamphlets handy to everyone. Or else the second part would be using electronic e-media. So that is where when anybody who comes and searches on Google gets an ad over there. Okay. So that thing also needs a data visualization aspect wherein that digital marketing expert will come to me and show it in my format. Say, for example, sir, if you go by using pamphlets, okay, your reach would be this much. You can give a revenue, or there would be a good revenue hike based on click or some person who is manually visiting. But if you go by electronic, we have n number of chances. For example, you can run a campaign on Instagram. So if you go even today also, you go, there is 100% reach turnover on Instagram, because if you are searching anything about related to educational or anything on Instagram, my ad being it is categorized into educational and ed tech startup, you will 100% see my ad which is been rolling, or my ad campaign which has been rolling on Instagram. Similarly on Twitter, similarly on WhatsApp, and sorry, WhatsApp, no, Facebook, and respective medias wherever. And there is one more aspect. Now if you see Chingari app, there's an app a TikTok, like main TikTok app. There is Chingari app. They have come up with so beautiful concept. I mean, I would say that if you don't use Chingari app, go and just check once. If we have this influencers, okay, social media influencers, they try to wear some new clothes, okay, and they make video, like they try to influence people that this is the latest trend that each and everyone is following. So what did this Chingari guys made in India person did it? He is trying to give you recommendation on the go. Like if a video is running, that person, whatever jacket, shoes is that person or that social media influencer is wearing, the algorithm will try to go and search it on Amazon, Flipkart, and what is the rate, it will try to compare on the go, so that one who is seeing the video can shop it out at that point of time. He'll click and that will be redirected to the app and you can buy it out. So this is so like the data visualization has taken such a boom that you make an API and that you connect to an to a data visualization aspect, and that can be seen on the go using an API. Like you are watching a video and at that point of time you thought that, oh, this shoes looks so nice, here you go, you have a pop-up saying, hey boss, look, I have this recommendation for you that on Flipkart or say Amazon or say Snapdeal, I have this shoes and the rate, and you can also compare the price. This is what how your storytelling on digital platform goes via marketing. So digital marketing, guys, you can use, or you can also use data visualization as your key aspect to explain things, and along with that you can also use pandas, numpy, and of course data science to increase your customers, your clients revenue, showing that this will impact and you will scale from say 0 to say 100, or from 100 to 200, and respective aspects. Okay, so any doubts, guys? Anybody who wants to speak out or wants to know on any other domain also? Like I have worked on multiple domain as a freelancing, so I can at least pitch you 20%, and from there you can take a up notch ahead. Anybody? Is there any role of data science in gaming world? Gaming world, yes. Data science has an aspect of it is a part of machine learning, which is called reinforcement learning. If you have heard reinforcement. So basically PUBG has this bots. Okay, so if you see very slightly, any PUBG gamers over here can help me out. जब भी बॉट आता है सामने ना, बॉट हमें directly shoot नहीं कर पाता है. He will either shoot it on my left or right, so that we understand. If you go search any PUBG streamer on normal PUBG streamers who are famous, like I personally was following Hydra. Okay, so they actually they come to know that कोई तो है जो bot है, that's the reason he's not able to kill us. Okay, so वो reinforcement learning है. They try to learn this from the environment. Okay, same Dota.
So I used to play Dota like a couple of years before. There's an international, there's a online game that's known as International. May I know who has asked this question on gaming sector? You might be knowing Dota, right? Yes, ma'am. Okay. Sorry, sir. Yeah. So do you know the like international level championship that has been run? Um, are you aware about Dota runs like they have top 10 contenders, and there's one guy named Dendi, if you know Yes, I know. Dendi. Yeah. So there was a reinforcement bot, okay, who killed Dendi. Like that person did not even touch the keyboard. There was a pen drive which was a reinforcement learning model. Okay, it was being plugged inside the device CPU PC. Okay, and he did not even touch the board. That pen drive as a bot tried to understand first what is the health issue, what is the environment, what is the positive and negative aspect of Dendy's in-game personality in that character, and he tried to learn that if I hit him from say 90-degree angle, the damage is more. So what he did, he just kept rolling around the character, and whenever he just got time, he just killed it in just two go. So if you see that match, I would highly recommend people go on YouTube and just see Dendi got defeated by uh, a bot, okay, in Dota. So those the whole team of that was like they were two friends who started off this, and they had like a team of say 11 or 12. They just took 3 months to train that bot to understand, and they defeated top 10 contenders in the whole world. Okay, and then after that, what was a beautiful aspect? Elon Musk came and hired them. So this is how your gaming sector is also evolving, and majorly reinforcement learning is the place wherein you can find, if you want data science in your gaming sector, touch base on reinforcement learning. But hold on, I would highly recommend first have a good glance on machine learning and then touch on reinforcement, because we have various types of machine learning models. Like if you have, there are types like first is supervised, another is unsupervised, then you have semi-supervised, and then here we come as reinforcement learning. So I would tell you that just touch based on machine learning models, get rid of that first, okay, because if you directly jump into reinforcement now, things will be really difficult for you to understand. So highly recommend spend time more on ML models and then try to understand ML algorithms. The roadmap ahead after ML would be very easy for you. You'll just sit in some minutes only. You can understand where I have to implement, what is the flaws, and how things work. So advanced version, but yes, gaming sectors and gaming sector is growing n number, because I'll tell you one thing, just think from a fact. If you see an IPL match start होने के पहले कितने सारे एनालिसिस दिखाए जाते हैं, कितने सारे मल्टीपल वेरिएट एनालिसिस दिखाए जाते हैं. दे ट्राई टू कंबाइन इवन बेस्ड ऑन टॉस ऑल्सो. दे प्रिडिक्ट कि अगर जो पहले टॉस जीतेगा इसका इतना परसेंट चांसेस है मैच जीतने का, या फिर द वन हु हैज won the toss and they have made one more filter, won the toss and selected to bat, won the toss and selected to bowl. They start showing the percentage, and then we see that if any person within the two teams has scored a double century in the future or not. So they also trend from that analysis, and taking those analysis into consideration, they come up and say that, boss, there is 100% chances that this guy has scored 200 on this pitch, can again score at least 50 in first initial overs. Okay, are you understanding? Like you see this experts talking on basis of the statistical analysis. So that's how your gaming sector works, and there is lot booming in gaming sector. But yes, you need to know Python a lot. Like you need to know from a very advanced level of Python to make these games and all. Okay. So any more questions, guys? I hope Uh, I would have given right answer. You would have understood it for you. Yes, sir, completely. Sir, I have a question. Yeah. Sir, how does data science work in deepfake technology?
Deepfake technology. Okay, so this data science, under data science, like AI comes. AI is the whole. Deepfake is AI. Okay, inside AI we have say deep learning. If you know deep learning models. Okay, so we have this back propagation network which learns. And if you see feed forward, okay, feed forward works in one direction, and back propagation works in two and four. Like it comes back with the learnings, and then again it goes into neural network and it tries to make it more accurate. If it fails again, it can come again and just give a glance that if it is not working properly, it will work on its weights. Okay, so deepfake is again something which is come up with some organization. Okay, and then they are just trying to work more on accuracy part. Okay, these are framework. Okay, this is kind of a framework which gives more, like it will give you much more accuracy. So for example, if you have a data set, you have run a model, and that model is showing you 78% accuracy, but again your organizational stakeholder who says that 78% is nothing for me, I mean I want good accuracy. So what you'll take, you'll take that, put in into frame, and use those pre-trained models to try to understand and where you're lagging, and you can improve your accuracy at the fake. Okay, now understanding this in a very low perspective. Okay, आपने एक बहुत advanced version को पकड़ लिया है. Let's come down little bit on the lighter version. Okay, have you learned about or listened about ensemble models? Anybody ensemble models के बारे में सुना है? नारायण, are you here? Yes, sir. ensemble models के बारे में आपने सुना है? Yes, sir. Yeah, can you give a glance what is ensemble models? Simple models are basically, sir, they are like a better version of the models. Like they give decision, like decision trees, random forest classifier, random forest regressor. Like they take many other models together and they give a output, and Right, the right, output is calculated with a vote. In right. regression, it's calculated by mean or average, I think. Upward, like it is, yeah. So he's right, he's almost there. So let me put it in a very easy words. Okay, ensemble models are, they train multiple models. Why multiple models? Because if you have a data set, so for example a population is there, from that population if you want that your one sample is giving very good accuracy and another sample is giving less accuracy. Okay, but you can't ignore the less accuracy sample. You need that data, because if you ignore that, you end up losing that data from your main model. Okay, so ensemble model, what it does is it includes all the model, the good learners, the weak learners, the average learners together. Okay, and then they perform like they upvote itself, and from that they will select the best using mean or median, any, like if you want you can take the like a upvoted score on median aspects also, or else you can take it on mean also. Okay, or they will upvote, there's an upvote classifier. Okay, which will try to say that हाँ भाई हमारे पास 10 मॉडल्स है, 10 में से ये दो बेस्ट है और ये दोनों में से ये दो बेस्ट है, या तो ये दोनों का मीन ले लो. ओके, या फिर ये सारे लोगों का मीन ले लो उठा के. सो दे विल include the weak learners also, they will include the good learners also, and they will include the average learners also. The best example for this is your classroom. Your classroom will consist also the guys who are not studying and copying, will also consist of average students who are just trying to say yaar मेरे को खाली passing marks मिल जाए or I get a good marks, that's enough for me, and someone who is putting so much efforts that they want to maintain the rank of being into first three or first two. Okay, so this is how. But still, when we declare the results, we declare and assume, we don't declare only toppers, we declare that from say TY, so for TYCS or say TYBSC IT A division, we have this many people who have passed. Okay, they have scored on this percentile. So that is combined score of one class as a majority. So ensemble method is doing this only. And if you really want to understand ensemble methods in deep, I would highly recommend, if you have heard this Cambridge Analytica scam that has happened. Is anybody aware in the class about Cambridge Analytica? Yes, That sir. Yes, sir.
Okay, can you put some light so that I'll take your help and put some light what exactly it was so that wherever you miss out I add in and I'll tell you. Anybody in the class can take up. The data got leaked from that company. Facebook was doing some business with them, Okay. and then there was a Senate hearing. That is Okay. all I know. No. So this is okay. This is the small aspect. Anybody knows in deep what exactly happened? Who was the culprit behind this? Narayan, you do you know? I don't know the culprit, sir, but I know what happened. Like data. Like, okay, I'll tell you the whole pipeline also, but I wanted to know how much do you know, because if you start, I'll add on it. So it was like basically a scandal, a data scandal, where millions of data leaked about personal accounts were leaked and many things were leaked. Mm-hmm. Okay, yeah, you're 10% right. Okay, let me put it this way. Okay, very interesting. कान वान खोल के सुनो अच्छे से, okay? Very interesting. Like you will understand how a person can make revenue out of this. Okay, so there was a professor, okay, who came into picture. He tried to build ensemble models based on behavior analysis. Okay, behavior. आपका behavior क्या है? What do you like? Okay, based on that he tried to cluster it into multiple aspects. Okay, उसको segments में cluster किया उन्होंने. तो उन्होंने क्या किया? He made an app. Okay, जिसका बाय डिफॉल्ट लॉगिन सिर्फ फेसबुक से ही किया उसने. एंड नाउ यू विल आस्क मी, सर जीमेल से भी कर सकते हैं तो फेसबुक से ही क्या को किया? ओके, so now this is an alert for the all Facebook users. आपके Facebook अकाउंट में ना एक सेटिंग होती है. ओके, आप वो सेटिंग में अगर आप जाएंगे, आई विल लीव दिस, मैं खुद नहीं बताऊंगा सेटिंग कहाँ पे, आप जाइए ढूंढिए बिकॉज ये आपका अकाउंट है. ओके, एक सेटिंग होती है जहां पे आप जो जो एक्टिविटी करते हो फेसबुक उसका एक प्रोफाइलिंग करना शुरू कर देता है. So जैसे for example, I go and I'm watching only Modi videos, okay? On say I search Modi videos and I try to look only Modi videos. उसके हिसाब से Facebook मुझे recommend कर रहा हूँ, मैं उसको वो recommendation भी देखता जा रहा हूँ. मेरा प्रोफाइल बन जाएगा he likes Modi, okay? And then for example मेरा आ जाएगा, okay? And then if I say I am how do I get to know, how do Facebook gets to know that I'm a vegetarian? Okay, I go and search for some foods in my near history, or मैं सिर्फ see, obviously if I'm a vegetarian I'll not go and watch what is non-vegetarian, how it has been cooked. I only say vegetarian foods. Automatically my Facebook comes to know. So like this, go search. Facebook is so accurate. जितना आप अपने बारे में नहीं जानते हो, गो टू देयर. अगर आपको बायोडेटा अपना बनाना हो फॉर एनीथिंग गोइंग अहेड इन लाइफ, गो टू फेसबुक. ही विल टेल यू व्हाट ऑल यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक. सो वहां पे पूरा लाइक अ कैश मेमोरी, वो पूरा मतलब ही मेक्स अ लिस्ट ऑफ प्रोफाइल वट एवर यू लाइक एंड दैट डेटा इज बीन सेंड टू फेसबुक. सो इफ यू वांट टू अवॉइड दैट, जस्ट गो, हर 3 महीने में एक बार उसको जाके उड़ा देना. फाइंड इट आउट कहां से होता है. वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज. ओके, जाके आप सीधे उड़ा दो उसको, और आप उड़ा दोगे तो योर डेटा विल बी सिक्योर. ट्रस्ट मी, बिकॉज फेसबुक वहीं से उठाता है आपका डेटा. फेसबुक नेवर कम्स एंड टेक्स इट ऑन द लाइव गो. आपके प्रोफाइल में भी वो नहीं आता है. वो बस वो एक छोटा सा कैश मेमोरी लाइक यू कैन से हुक लॉगर बना दिया है जहां पे वो सारा प्रोफाइलिंग होता है, और वो खाली एक एपीआई फेच करता है वहां से और सारा का सारा डेटा आ जाता है. सो दिस गाय सॉ दिस फ्लॉज ऑफ फेसबुक एंड उसने क्या किया मालूम है? फेसबुक से ही लॉग इन किया. तो जितने लोग उस ऐप पे ओके आए, ओके, जितने लोग ने, और वो मास्क मतलब दैट वाज बीन हायर्ड by this Cambridge Analytica organization, okay, and that organization deals with giving you results for campaigning, okay, इलेक्शन कैंपेनिंग, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेनिंग. तो अब इसमें कैसा होता है? फॉर एग्जांपल इनके मॉडल से फ्रॉम फेसबुक पता चल गया कि ये बंदा लाइक द यूजर, व्हाट डज दिस यूजर लाइक. बेस्ड ऑन दैट दे टुक दैट डेटा, दे ट्राइड टू क्लासिफाई एंड अंडरस्टैंड कि is that person, for example in India, if that person is liking Modi or liking Rahul Gandhi, like Congress or BJP,
okay, like that. And then what did they do is, जैसे उनका एक presidential candidate था और दूसरा presidential candidate था, वो डेटा से वो लोग ने clusters बनाने लग गए, and like they tried to make some segmentation wherein president nominee 1 है जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का क्लाइंट है, ओके, उसने उसको हायर किया है, उसने कैम्ब्रिज को कि मेरे को जिता के दो कैसे भी करके. So using this the ensemble learning model and based on its accuracy, they tried to target via social media only. क्या किया मालूम है, जैसे आई फॉर एग्जाम्पल आई इफ आई डोंट लाइक ट्रम्प, ओके, मेरे को कैंडिडेट नंबर 2 ज्यादा पसंद है, ओके, मेरे को ना मैसेजेस आने लग जाएंगे, मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को ना नंबर, मतलब फेसबुक पे तो ऑब्वियसली नंबर मिल जाता है, मेरे को पर्सनल मैसेजेस आने लगेंगे. ये दिखाया जाएगा कि आई लाइक जो कैंडिडेट को मैं पसंद करता हूँ उसने क्या क्या स्कैंडल्स किए हैं, क्या क्या गलत काम किए हैं, उसका पूरा हिस्ट्री, दैट बिकॉज ऑफ दिस हैपेंड, ये सारा ना पुश नोटिफिकेशंस मेरे को भेजने लग जाएंगे. सो ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, आई एम बीइंग बम्बार्डेड अगेंस्ट दी ऑल लॉ क्राइम्स, और कुछ भी गलत जो उसने बंदे ने किया है मेरे को उसके ही खाली मैसेजेस आते रहेंगे. सो आई विल स्टार्ट डेवलपिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन माय माइंड कि यार मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ये तो इसको इतना इसने किया है, इसने ये गलत किया है, एंड यू नो then I will forward this to someone else. That's gradually, like everybody knows. So ये रीजन से क्या होगा, मैं मेरे क्लस्टर, मतलब ऑब्वियसली मैं मेरा है तो मेरे अंडर जो क्लस्टर्स होंगे, आई विल हैव 2 पर्सपेक्टिव, मेरे नीचे भी 2 लोग होंगे जो एक को लाइक करते होंगे, एक को लाइक नहीं करते होंगे, तो मैं जिसको वो लोग लाइक करते हैं उनको ही मैं वो नेगेटिव वाइब आगे भेजूंगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कैसा होगा ना, आप ना एक सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो उसी के फेवरेट कैंडिडेट के अगेंस्ट, एंड देन दैट इज बीन पुश्ड, एंड वो फिर वो दूसरे कैंडिडेट को वोट करेगा. सो ये क्या होता है, बकेटिंग सिस्टम होता है. दिस इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन. में ये बकेट से निकाल के मैं दूसरे बकेट में इसको ला रहा हूँ. सो इनडायरेक्टली आई एम ट्राइंग टू, जहां पे उसको खाली 10 वोट मिलने वाला है, ले भाई अब तेरे को 20 वोट मिलेगा. So this was all Cambridge Analytica, but again, scandals do happen. Results भी आ गए, scandal ने help कर दिया. That guy who developed this model got so much money, and इतना पैसा मिल गया कि भी 10 साल भी scandal चले कोई problem नहीं है. The company got closed, but company made so much money कि it doesn't give shit now. They are all awesome. Are you getting? कट एंड Amazon भी सेम सर करता है कस्टमर सेगमेंटेशन. कस्टमर सेगमेंटेशन, और फिर बाद में आई टेल यू Amazon is why Amazon is successful. मैं बताता हूँ. Amazon successful इसलिए है because you know it is good on its recommendation part. रिकमेंडेशन पार्ट में भी कैसे करता है, वो बाइवेरिएट एनालिसिस पे रिकमेंडेशन करता है. इफ यू सी, कभी भी आप कुछ खरीदने जा रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली कभी भी आपको सेकंड लेवल पे नीचे यही बताएगा कि इफ यू बाय दिस, यू द कस्टमर्स हु हैव ब्रॉट दिस हैव टेकन दिस आल्सो टुगेदर. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम बाइंग अ बाइसाइकिल फॉर मी, मेरे को तुरंत नीचे यहाँ पे मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ, मुझे तुरंत नीचे मिलेगा कि गाय दिस इज द बेस्ट मैच इफ यू बाय बाइसाइकिल, बाय अ हेलमेट आल्सो, okay, or buy a light also that you can put behind while you're riding the cycle, so that the vehicle coming behind you knows that you're riding. It shows professionalism. या फिर पूरा kit, tool kit, glove box, helmet, cyclist के लिए जो kit होता है वो. So these are called bivariate recommendations that they give, that you're buying this boss, एक काम करो इसके साथ ये protection भी ले लो. It is very good, and then they will start showing offers over there. All set, guys? Yes sir. Okay, perfect. Let's move ahead. किसी और को कोई questions before we kickstart today? I'm still open for questions. Yes sir. Yeah, please ask. सर आपको माइनक्राफ्ट गेम मालूम है? Minecraft, yeah. सर मुझे जानना है कि वो गेम में ग्राफिक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन उस गेम के अंदर इतना सारा और उसका साइज भी इतना कम कैसे? उसके अंदर AI भी है और बहुत सारे तरह के स्किन भी है. तो मुझे जानना है कि इतने सारे वो डेटा वो लोग इतने कम साइज में कैसे फीड किए? That's where you come ना. एल्गोरिदम जो लिखते हैं वो ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम होता है. देखो, प्रोग्रामिंग ना 2 टाइप में होती है. एक होता है, जैसे अभी आप ही देख लो, इसमें पाइथन में आप 3 लाइन लिख सकते हो. नारायण ने कोडिंग किया है बहुत सारा, इसमें इसने डिप्लॉय कैसे पता होगा.
पाइथन का एक ना आप फॉर लूप में भी लिख सकते हो और एक लैम्बडा फंक्शन में भी लिख सकते हो. डू यू ऑल नो लैम्बडा फंक्शन? Yes, sir. तो लैम्बडा फंक्शन Yes. क्या करता है? पूरा कोड एक लाइन में लिख देता है. यू डोंट नीड टू ओपन अ लूप, गो इनसाइड, 2-3 लाइन लिखो, प्रिंट लिखो, फिर उसको रिटर्न करो. नहीं, एक लाइन में सब कुछ खत्म. सो जब आपका ग्राफिकल एस्पेक्ट्स पे होता है तो वहां पे भी आपका यही होता है. आप जितना ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम लिखोगे ना, बिगो नोटेशन ओ, गो बिगो नोटेशन, गो एंड रीड दैट कंसेप्ट, बिगो नोटेशन. तो जब हायरिंग होती है ना, तो जो प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनीज हायरिंग होती है ना, वो लोग बोलते हैं यू राइट अ लूप. आप लिख के दोगे, बोलेंगे नहीं इसको और छोटे में कैसे लिख सकते हो, वो पूछते हैं हम लोग. सो दिस इज हाउ इम्पैक्ट्स कि आपका जो बोलते हैं ना, नंबर ऑफ आइट्रेशन जितने कम होंगे, आपका ऐप या वेबसाइट उतना लाइट रहेगा, उतना फास्ट होगा, उतने कम टाइम में होगा. आई डू वन थिंग, मैं ना बिगो नोटेशन पे ना कुछ वीडियोस शेयर करता हूँ. आई पुट इट ऑन व्हाट्सएप. गो, आज मैं डाल दूंगा, जस्ट गो एंड रीड. वो कॉन्सेप्ट समझ जाओ, तुम्हें ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा. मतलब इट इज दिस बिगो नोटेशन कॉन्सेप्ट इज ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स. ओके, ओनली ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स में मैं बोल रहा हूँ. इट विल ओपन ऑल द डोर्स. तुम्हें पता चल जाएगा क्यों एपीआई इतनी हैवी होती है, क्यों एपीआई इतना लाइट होता है, क्यों ग्राफिकल. और दूसरा, कितने टाइप्स ऑफ, डज एनीवन नो, जो इमेज बनती है, ग्राफिकल इमेज होती है, उसके कितने एक्सटेंशंस होते हैं? किसी को पता है? जेपेग होता है एक. ओके, और कौन सा होता है? एंड पीएनजी होता है. PNG एक और टिप होता है. होता है, और PG. हाँ, कौन सा? प्लीज कम अप. एक टिप होता है TIF, देन CR2 होता है विच इज रॉ फाइल, हम्म. एंड सबसे लाइटर वर्जन PNG कौन सा होता है? सबसे लाइटर सबसे लाइट वर्जन JPG. नहीं, तुम गलत हो. मतलब that contains very low data. मतलब अगर हम लोग if we are doing any processing, तो वो सबसे बेस्ट होता है हम लोग के प्रोसेसिंग के लिए. लेकिन इमेज एक जेपेग इमेज है अगर, फॉर एग्जांपल, ओके, जिसको मैंने डीएसएलआर से लिया, या फिर मेरे 40 से, अभी तो चाइनीज ने सीधे लेके आया 48 मेगापिक्सल कैमरा से लिया, मेरा एक जेपेग इमेज टर्न्स आउट टू बी 4 MB का. उसको मैं कैसे अपलोड करूंगा? ओके, फॉरगेट, आई टेल यू. वेबपी का नाम सुना है किसी ने? वेबपी इमेजेस सुना है कभी किसी ने? वेबपी इमेजेस सबसे लाइटर वर्जन होता है. वेबपी होता है सबसे लाइटर. करते हैं ना सर, सॉरी. वेब डेवलपिंग एंड वेब डिजाइनिंग के लिए. या सो ये वेब डेवलपमेंट में भी होता है, नो वरीज. बट जैसे अभी मैं बताता हूँ, आई फेस्ड अ प्रॉब्लम जहाँ पे मुझे ना पिक्चर की क्वालिटी, मैं आई वाज डूइंग अ पीओसी फॉर अ रिलायंस प्रोडक्ट व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर. तो उनका ना आर्टिकल सेक्शन था पूरा, जो कि ना रीजनल आर्टिकल्स था, जो कि उन लोग को ना, उनका कॉम्पिटिटर था मैक्सटर करके. तो जियो मैगजीन्स का जो प्रोडक्ट है, उनका कॉम्पिटिटर मैक्सटर था. दे वांटेड, इंग्लिश में तो हो जाता है, लेकिन रीजनल चीजों को HTML पे कैसे आप दिखाओगे? दो देवनागरी फॉन्ट इन हिंदी और बहुत सारे दूसरे दूसरे फॉन्ट्स होते हैं, उनको इम्बाइब करके आपको उसको प्रोड्यूस करना है. उसके फॉन्ट्स इंटैक्ट होने चाहिए, वरना वो गार्बेज वैल्यू फेंक देता है. ओके, HTML में. तो वो पूरा रिसर्च करके मैं कहाँ पे अटका? आके प्रोसेसिंग में. सो कैसा होता है, मतलब प्रोसेसिंग में जो आपका इमेज होता है ना, इमेज लोड होने को टाइम लेता है इफ इट इज इन JPEG. अगर आपका सर्वर, फॉर एग्जांपल, एक पैच ऑफ सर्वर जो आपका होता है ना, एक क्लस्टर होगा, समझो एक क्लस्टर में 20 आर्टिकल एक बार में जाएगा. 20 आर्टिकल में जाने के लिए उसको एक बैंडविड्थ दिया जाता है. वो बैंडविड्थ में अगर हैवी इमेजेस होंगे, DSLR ये वो, क्योंकि कोई भी मैगजीन अच्छा फोटो देता है जो कि बहुत बड़ा होता है साइज में. लाइक वो DSLR, प्रोफेशनल DSLR होते हैं जिनका एक एक इमेज 10-10 MB का होता है. ओके, तो वो लोड नहीं ले पाता है, लो एंड डिवाइसेस में नहीं होता है. तो जस्ट टू ओवरकम, वो रिसर्च में मुझे पता चला, वेबपी करके भी एक है जो क्या करेगा, साइज कम कर देगा, लेकिन उसका जो पिक्सल क्वालिटी और ये सब वो वैसे ही रखेगा. So very beautiful concept, जहाँ पे मैं, मतलब even I was not knowing, but yes, that's the learning process. If you go and see, you'll end up learning so many things. Trust me. बस just be passionate about, हाँ मुझे करना है. You'll end up so much. So क्या करते हैं मालूम है? जो आप बोल रहे हो ना, माइनक्राफ्ट में इतना कम क्यों है? बिकॉज वो लोग ना जो इमेजेस है ना, उनको एकदम लोएस्ट फैक्टर पे डालते हैं विथ हाईएस्ट रेजोल्यूशन.
तो क्या होता है ना, आपका जो 10 MB का है ना वो 10 KB में दिखेगा, लेकिन उसका जो रियल इफेक्ट है ना वो उतना ही वैसा, मतलब वो इंटैक्ट रहेगा, साइज कम हो जाएगी लेकिन वो बोलते हैं ना वो इम्पैक्ट उतना ही छोड़ेगा, द क्लैरिटी विल बी मस्ट। दैट्स द रीजन माइनक्राफ्ट में खुद भी आप बना सकते हो, यू कैन इवन, आई व्हाट आई नो, आई सीन वन ऑफ माय फ्रेंड्स सन प्लेइंग दिस माइनक्राफ्ट, वो 12 साल या 13 साल का है, so he plays this on Android TV. So he makes his own city. Yeah, he designs a shop. He designs his own house. Am I right? That's Minecraft, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah, exactly. So वो recommendations भी देता है कि आप ये एरिया में कैसे टाइप में बना सकते हो for the new starters, if I'm not wrong. Yes, sir. Is it? Do you play Minecraft? Yes, sir. I play Minecraft. तो तुम्हारा दिमाग आर्किटेक्चर में जा सकता है if you really like strategy, again good. So I recommend if you want to play Clash of Clans game. Yeah, okay. Yes, इसमें sir. I strategy, also play Clash of Clans. I'll also play Minecraft yeah. and chess also. Which? Chess. Chess, okay, yeah. So Clash of Clans is again, I mean, I highly recommend you. Life में Clash Yes, of sir. Clans ऐसा game है which will help you, literally it will help you to understand how you can build strategy. And I'll tell you one common factor, मैं TYBSC के फाइनल ईयर में था तभी Clash of Clan was on boon, okay. Yes, sir. The only one thing I learned from Clash of Clan is मैं उसको एग्जाम टाइम पे भी पढ़ते पढ़ते खेलता था, बिकॉज वो मेरा दिमाग का स्ट्रेटेजी बढ़ाता था. सो दे अभी भी खेलते थे सर आप? हाँ, नहीं, अभी मैंने वो आई गेव इट टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स सन जो माइनक्राफ्ट खेलता है, उसको मैंने वो दे दिया, बिकॉज वो टाउन हॉल 7 पे था और मैं टाउन हॉल 11 पे था. वो देखा, वो बोला भैया दे दो मुझे, सो आई वाज लाइक ओके टेक नो वरीज. सो आई डोंट हैव टाइम टू ओपन बिकॉज अपग्रेड्स आर वेरी बिग, दैट्स द रीजन. हाँ. ओके, Yes, sir. सो यू अभी अपडेट आ गया, अभी तो टाइनल 13 पहुंच गया. या तो बिग नोटेशन ओ को आप पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं. ओके, ओके सर, थैंक यू. सो एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? Okay, so let's start. Data visualization, okay, with matplotlib. It is about understanding Python library again. Okay, we were responsible for data processing, which was NumPy and Pandas. Now it is time for us to see a library that takes care of their visualization. तो जो वो data बनाते हैं उनको हम लोग visualize करते हैं. So that is used by a library which is called matplotlib. Okay, so there are two types of libraries. Okay, I'll just make okay, there are three types. Okay, मैं आपको advanced version भी बताता हूँ. एक है matplotlib which you are seeing. Another I'll show is that's Seaborn. Okay, ये Seaborn करके है, ये भी बहुत अच्छा लाइब्रेरी है. दिस इज द स्टैटिस्टिकल डेटा विजुअलाइजेशन. तो ये बहुत एडवांस लेवल जो आपका होता है ना, बेसिक लेवल मैटप्लॉटलिब है. ओके, विच वर्क्स ऑन योर डेटा. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ये है. ओके, और एक और है, दिस इज दिस. सो दिस इज अ वेरी लेटेस्ट एडवांस्ड, मतलब यू कैन जस्ट, ये देखो ये बहुत एडवांस है. जैसे आपको अगर मैप्स, टेरिटरी या फिर प्लॉटिंग होता है ना, जो प्लॉट्स होते हैं कि मेरा इतने बाय इतने का प्लॉट है, या फिर मेरा ऐसा है, या फिर मेरे को सी फॉर एग्जांपल थर्मोस्टैट्स का मेरा पूरा बिजनेस है, या फिर आई हैव से न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पे जो विजुअलाइजेशंस होते हैं वो ये बोके से होते हैं. ओके, so this is a very advanced, matlab you can say this is the grandfather of visualization. Okay, very advanced. So these are the three visualization libraries that are used. Okay, but again Seaborn पे जा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मल्टीपल एक बार में दिखाना हो, बट वो सब मैटप्लॉटलिब से भी होता है. तो फर्स्ट let's touch base on the basic version, and after that we will conquer the, like, going ahead in some next session I'll also touch based on this. But heart is this, matplotlib is heart of data visualization. Okay, so library, this is a Plotly. sorry By Plotly also, so it is good for visualization. yeah Plotly, but again it is an extension version. Like Plotly is again extension. जैसे आपको कुछ specific use cases के लिए वो ज्यादा use होगा, but maps and all. yeah,
But again, if you see there's a mandatory, मतलब एक mandate रहता है like 2 and 4. If you have this also, you can use this also. But again, good that you have knowledge about this. वो भी use होता है, but only specific use cases के लिए. Okay, so so then how do? We go for okay. So if you want to understand, you can just click on this http://matplotlib.org. यहाँ पे आपको पूरा matplotlib के बारे में with examples मिल जाएंगे. Okay, installation में either you're doing it with Anaconda, you will go with Conda installation matplotlib. Okay, if you are using pip, it's basically pip install matplotlib. Okay, and then let's understand what is the architecture of this matplotlib. Like अगर आप आर्किटेक्चर समझोगे, आपको कोडिंग लेवल पे समझ में आ जाएगी कि इसके बाद ये क्या आएगा, इसके बाद ये क्या आएगा. ओके, so basically there are 3 layers in this. One is scripting, which is the backend layer. One is artist, which tries to draw कि भाई आपने जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ. बैकएंड क्या करता है, पूरा का पूरा इवेंट्स को रेंडर करेगा, कैनवस बनाएगा, एंड इट विल गिव यू. ओके, सो जो बैकएंड लेयर होता है, बैकएंड लेयर क्या करता है, बैकएंड लेयर ना फिगर क्या करता है, बेसिकली इट गिव्स यू अ कैनवस. ओके, कैनवस बना के देगा कि ये ऑब्जेक्ट को मुझे इस कोड के नीचे पेस्ट करना है. ओके, यूजिंग द एपीआई. फिर उस चीज को मैं रेंडर करूंगा. रेंडर एट मींस उसमें क्या क्या मेरे को कहां से कितने पॉइंट तक बनाना है, कौन से लेवल पे बनाना है, that it will be getting rendered over there. Then you have say events. So events कैसा होता है, it is the user's input. Like user wants to plot say from 1 to 0, और से उसको खाली है ना, उसको एक S curve बनाना है. So that is an event that goes inside. So that is handled by backend layer, which will only be responsible for loading loading the whole you can say पूरा कैनवस. जो होता है ना, पेंटर पिकासो पेंटिंग बनाता है, वैसा टाइप ऑफ बैकएंड संभालता है. आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट इज the intermediate level, like a stakeholder in between. Like you can say a business analyst जो developer से भी मिला हुआ है और हमारे स्टेक होल्डर से भी मिला हुआ है, लाइक अ कम्युनिकेटर. ओके, सो आर्टिस्ट होता है जिसमें क्या होगा, फर्स्ट विल बी योर फिगर बनाने के लिए आपको एक्सेस करना है. एक्सेस देना है कि ये एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस कहाँ पे होना चाहिए, एक्स टिक्स वाई टिक्स पे होना चाहिए. फिर क्या टेक्स्ट रहेगा, तो टेक्स्ट ओके बेस्ड ऑन बोथ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस. फिर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर एक्स टिक्स एक्स लेबल्स, एक्स टिक्स एंड एक्स लेबल्स. सो हर दोनों में वाई टिक्स वाई लेबल, एक्स टिक्स एक्स लेबल. क्योंकि आप जब इसको लिखते हो तो कैसे होता है ना, यहाँ पे दिखना चाहिए कि वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है. So that is what it takes over here. So this is the artist who tries to annotate. Okay, a good word is tries to annotate things in a very cumulative aspect. So annotation क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनोटेट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपने बनाया है, आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो, वो बंदे को नहीं मालूम है कि आपने किस परसेप्शन पे इसको बनाया है. इफ यू डोंट पुट ओवर योर काउंटिंग एंड इफ यू डोंट पुट ओवर स्क्वायर वैल्यूज, ओके, उसको कैसे पता चलेगा कि क्या स्क्वायर वैल्यूज या काउंटिंग है. सिमिलरली व्हेनेवर यू आर कोडिंग इन इंडस्ट्री, तुमने एक पीस ऑफ कोड को लिखा है और उसके बाजू में अगर आप उसको एनोटेट नहीं कर रहे हो कि किस लिए आप लिख रहे हो, ओके, तो जो आपके पीछे जब आप छोड़ के जाओगे या फिर you're leaving to some other project or you're handling some other project, a new person who comes in will never try to understand. So that's a good habit. Whenever you're writing a code, just try to annotate why you're writing that, until and unless it is not a API level or until and unless it is not a library. Okay, so आप कोई logic लिख रहे हो तो उसमें लिख दो ये मैंने इसके लिए लिखा है and from here it is going like this. Okay, so that is what the role of artist layer is. It tries to build the basic structure from figure, इवैल्यूएशन, प्लॉटिंग ऑन एक्सिस, क्या क्या टेक्स्ट रहने वाले हैं, कौन से पैरामीटर्स पे टेक्स्ट होंगे, विच इज वाई एक्सिस पे रहेंगे, एक्स एक्सिस पे रहेंगे, एंड वेदर इट इज अ लाइन विच कैन बी ऑन 2 dimensional बिकॉज वी आर यूजिंग 2 एक्सेस ओवर हियर. ओके, सो this is your artist layer. Scripting layer is against. Scripting layer क्या होता है, यहाँ पे PyLab and PyPlot. Okay, so this is the other two general, like in general we talk about these two things, which is like 2 packages which are installed inside our matplotlib. Okay, and it is internal modules of matplotlib. So basically PyPlot क्या करता है ना, Python code का plotting करता है. PyPlot is Python codes plotting. So basically क्या करेगा ना, वो एक matplotlib के API को लेगा जहां पे हम उसको बोलेंगे कि हमें ना इतने different type के you can say different types of
प्लॉट्स को बनाना है, से हिस्टोग्राम, बार प्लॉट, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा ना, पाई प्लॉट में वो पाइथन के कोड को प्लॉटिंग करना शुरू कर देगा. सो दैट्स वेल, सो इट इज लाइक पाई प्लॉट इज द इंटरमीडिएटरी लेवल इनसाइड योर स्क्रिप्टिंग लेयर. पाई प्लॉट इंटरमीडिएटरी, जैसे आप स्क्रिप्ट लिखोगे हाथ से इन लाइन ऑफ कोड, that will be converted using pyplot and then shown to your upper layer, which is जो backend layer में canvas बन रहा है उसमें दिखाया जाएगा. Okay, so pylab, अगर pylab को import करना है, from pylab import star, that means all. Okay, but this is just a basic. Okay, we will work more on pyplot. So pyplot क्या करता है, comes as an extension with your matplotlib. So let's try to understand with the code perspective for today. Okay, here we go. So basically I am trying to import matplotlib.pyplot as plt and I am also giving numpy. Why? Because मेरे को arrays पे काम करने हैं जहाँ पे मैं numerical approach and numerical aspects देने वाला हूँ. Okay, so here we run, we import numpy as np. यहाँ पे मैं plt, okay, matplotlib, okay, matplotlib dot pyplot, python plot को as a alias name I am giving plt. Okay, again this is like same Karan Arjun, which I say for our Python libraries. And then we say plt.plot, which will take plt.plot बनाएंगे तो ये ना canvas को initiate करेगा, which will go inside your backend layer. Okay, pyplot fire करेगा and then you see एक array बनाना है जिसमें 1 2 3 built होना चाहिए. Okay, but now I'm not putting show over here, इस वजह से वो लाइन दिखा नहीं रहा है. Okay, let's take it in a very optimized way now. अब ये मैंने 2 लाइन में लिखा है जहां पे मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ प्लॉट को, लेकिन मैंने एक numpy array दे दिया है, तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है. उसी को मैं वन लाइनर में क्या डालूंगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग np.array डायरेक्टली पुट एज अ पैरामीटर ओवर, ये लिस्ट ही पास कर देता हूँ मैं एज 1 2 3 4, तो ऑटोमेटिकली उसे पता चल जाएगा आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर. Okay, so this is how it will run. So let's run it once. इसको run किया, empty. I'm putting it in one liner now as a parameter. It knows from where you have to write. Okay. Second, after understanding basics, it is like we have a line chart. So line chart कैसे करता है? A line chart can be drawn straight as you see over here. Okay, or can be drawn using some non-linear approach also. So non-linear approach में कैसा होता है? For example, you have sine, theta, cos. So based on that also you can draw some lines which are like you can say curvish in nature. So basically हमने क्या किया है? We are trying to put a equation. Okay, line line कैसा है ना, एक equation से बनता है. So we are taking sine, okay, 3 into x divided by x. उसको हम लोग कैसे लिख के visualize करेंगे? For this we are importing matplotlib as plt, numpy ले लिया है. We are taking np.arrange. Okay, np.arrange, that means वो एक array बनाएगा. Okay, arrange kind of a list on an array which will have say -2 into np.pi. Okay, and into np.pi 2 into, तो negative, from negative to positive. Okay, वो लेगा in -2 to 2. Okay, based on that और उसको एक additional parameter देगा pi. Okay, which is from 0.01. Okay, and then I'm giving my टारगेट वैल्यू विच इज y. सो मेरा जो x है वो तो एक रेंज लेके जा रहा है. ओके, विथ पाई का वैल्यू is always constant for all the calculations. Okay, and then I'm giving my original equation which is y is equal to np dot sine, which is sine. Okay, and then 3 into x divided by x, and then what I'll do is मेरा x में जो है और y में जो है उसको combine करके मैं plot कर दूंगा. So I'll take x and y, I'll try to plot. So if you see इनका जो calculations है वो ये ratio में आ रहा है पूरा. Okay, so this is, if you can, you say you would have heard about this sinusoidal waves. So this is sinusoidal waves based on that. Okay, so next, this is line chart. Basically you want to draw a straight or a uniform. अगर आप देखोगे mathematical aspects, because your department, normalized distribution you can say. Okay, so histogram next. Histogram, everybody is familiar, everybody knows what a histogram is. Okay, very commonly used. I guess we are making it from our school days only. Okay, so again, how do we do? There's a I have randomly made
a array which starts from, say, okay, this is import familiar, okay, what I've said, import numpy. अब numpy use करके मैं क्या कर रहा हूँ, I'm making a list, okay, pop, okay, जिसमें मैं numpy which is np.random integers which is rand int, okay, random integers will start from 0, go till 100, okay, okay, go till 100 and it will take 100 times वो revolve करेगा, मतलब randomly. तो जैसे क्या होगा, 0 से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट 100, उसके उधर उसने एक अल्फाबेट उठाया. So let's run this. So random integers it will pick from this range, 0 से 100 के रेंज में वो 100 टाइम्स आइटरेट करके कोई भी एक वैल्यू पिक के 100 टाइम्स आइटरेट करके गैप लेके वो उठाएगा एक. ओके, सो दिस इज हाउ योर एरे रैंडमली, ओके, रैंडम इंटीजर्स का एरे बन जाता है. ओके, this is done, and then based on that thing only you want to put it into histogram. So histogram works on number which is n, कि कितने हैं टोटल यहाँ पे. there are 100 digits, okay, 100 sample spaces, okay. They can be classified into bins because say for example I give you a like you are an insurance company holder, okay. मैंने आपको बहुत सारा डेटा दे दिया है और मैंने आपको बोला है कि डू सम एनालिसिस एंड टेल मी कि फ्यूचर में अगर मुझे मेरे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है तो मुझे कौन से एज ग्रुप को सबसे ज्यादा टारगेट करना होगा. तो आप क्या करोगे, एज उठाओगे, उसको 10 के 10 बिन्स बना दोगे, बिकॉज द वन यू शुड नो दैट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि कोई बंदा जो 5 साल का है या 10 साल का है भी पॉलिसी ले सकता है बिकॉज उसके पेरेंट्स ले रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, एंड देयर कैन बी पॉसिबिलिटी समवन हु इज लाइक 70 प्लस या 60 प्लस या रिटायरमेंट के बाद उसको कोई पॉलिसी लेना है, दैट कुड बी बेनिफिशियल, लाइक म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर हिज. ओके, सो ये इंश्योरेंस का करें, बिनिंग कर देंगे. दे विल ट्राई टू बिन लाइक 10 के 10 ग्रुप्स बना देंगे एंड देन दे विल से दैट कि if you want a high revenue return from any of your customers, try to target, say if you see this plot only. तो अगर मैं ये प्लॉट को कंसिडर करूंगा तो मैं अपने स्टेक होल्डर को क्या बोलूंगा कि हमारे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ओके, ये जो एज ग्रुप है विच इज सेट 10 to 20. तो देर इज पॉसिबिलिटी कि 18 इयर्स के बाद जो बच्चे 18 क्रॉस कर रहे हैं, दे कम टू एन अडल्ट like adult age considered 18 plus, okay. Then the parents are trying to invest more money कि अभी से ही 18 साल का हो गया, अभी से ही इसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं for insurance, like will take insurance on his name for a long term, like और से LIC इसको छोटे एज में से LIC ले लेते हैं for a long term, returns बहुत मिलेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, एक बिनिंग एल्गोरिथम हो जाएगा. So that's the reason whenever you're working with हिस्टोग्राम यू विल पुट बिन्स. तो बाद में हमें बिन्स का भी वैल्यू देना पड़ता है कि हमें 20 के बिन्स में इसको डालना है. सो बिन्स क्या करता है, कुछ नहीं करता है. 20 मतलब 0 से 20 ये एक बिन हो गया, 20 to 40 ये एक बिन हो गया, 40 to 60 ये एक बिन हो गया, 60 to 80 एक बिन. So like this it will divide the whole visualization into 20 bins, okay. And this is patches. पैचेस कुछ नहीं है, पैचेस सारा का सारा डेटा लेगा. पे पॉप का जो है ना, ये जैसे ये एक पैच है, 2 पैच, तो ये पैचेस लेगा और उसको विजुअलाइज करेगा. ओके, सो लेट्स रन. तो दिस विल गिव यू अ गुड इम्पैक्ट, पूरा डाल देगा. एफसीसी द पहले डेटा चेंज हो गया था, अभी मैंने रन किया तो दिस डेटा व्हिच इज शोइंग. अगेन इफ आई रन दिस इट विल टेक रैंडमली, ओके. एंड नाउ इफ आई रन दिस, दैट अगेन दिस विल गेट चेंज्ड. सी, so if you see now the whole the alert ratio is between this, I guess this is 80 के बाद वाला 5 में, okay. So this is how it works. The different other aspect of a bar graph is which works purely when you have separations in between, okay. It is very neat and usually used more in organizational perspective. So you have import matplotlib, you are giving an index which is 0, okay, 0 1 2 3 4, okay. और यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने पैच और बिन लेवल पे दिया, हमने उसको हिस्ट के अंदर डाल के पैचेस और बिन्स दिए. यहाँ पे हम डायरेक्टली वन लाइन में उसको बुला रहे हैं. वी आर नॉट टेकिंग ऑल दिस तामझाम, ओके. बेसिक तामझाम हम नहीं देख रहे. वी आर जस्ट टेकिंग लेट द API हैंडल एवरीथिंग. आई एम जस्ट गिविंग यू वैल्यूज. तो ऑटोमेटिकली द इंटेलिजेंट पर्सपेक्टिव ऑफ दिस लाइब्रेरी इज आप एक इंडेक्स बना दो जिसमें कुछ वैल्यूज दे दो, ओके. सो आई एम गिविंग 0 1 2 3 4.
ओके ये इसके इंडेक्स है, उसके वैल्यूज दे दिए 5 7, तो बेसिकली ये अपना इंडेक्स बना देगा, उसके वैल्यूज हैं, और उसको मैंने सीधे बोल दिया प्लॉट डॉट बार, ओके प्लॉट डॉट बार कर दो, ओके एंड आई हैव गिवन द वैल्यूज, वो ऑटोमेटिकली उसने हिस्टोग्राम बना लिया है बट विथ बार चार्ट, ओके तो दिस इज नॉर्मली बार, ओके बार अगर आपने दे दिया है तो बार ग्राफ का वो बेसिकली कर लेगा and it will take same resemblance as a histogram, okay now if there is also call for a again if you have multiple aspects, okay multiple aspects में भी अगर आप देखोगे तो एक randomly generated होगा index, तो randomly generate अगर index करना है तो आप इसको np.arrange दे दो 5 अगर आपको manually नहीं डालना है, okay so np.arrange give a range of 5 and then take the values and based on that you will put, फिर वहां पे भी कैसे करना है आपको ऑन द गो 0.5 से 0.4 से डिविएट करना है इस चीज को ऑन द रन, ओके जैसे आपको आपको किसी ने बोल दिया है कि मेरे को ना रोलिंग पीरियड दे दो आगे का, यू जस्ट गिव मी अ रोलिंग पीरियड दैट फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में द प्राइस केम ऑन से 10 am 10.2 am and give me a rolling period of next 4 minutes, तो आप इंडेक्स में कैसे उसको रिफ्लेक्ट करोगे इंडेक्स प्लस 0.4, ओके और से जितना भी मिनट्स आपको रोलिंग पीरियड डालना है वहां पे डालोगे तो बेस्ड ऑन दैट इट विल स्टार्ट शोइंग ऑन द रन, ओके सो आप जब उसका एक्सटिक्स देखोगे एक्सटिक्स में इंडेक्स प्लस 0.4 वेरिएशन बढ़ जाएगा एंड उसके हिसाब से वो प्लॉट करेगा, दैट मीन्स कि मेरा जो ये भाव है, ओके एक शेयर का भाव है ये 4 मिनट तक नहीं बढ़ रहा है, तो ये 4 मिनट तक यही भाव दिखाना चाहिए उसको ऑन द स्क्रीन when you're visualizing it this in front of your customers, okay so this is how you run. Then the same thing is on horizontal graph. horizontal में क्या है खाली आपको बार में एक h लगाना है which is horizontal which is bar horizontal, okay so it's bar, okay जहां पे आप क्या करोगे again over here you're trying to give an index which takes normally as np.arrange you have a value which is 57346, you are giving a standard deviation also over here kind of इतना split होना चाहिए, you're giving a title over here which is a basic title that needs to be printed. अब यहाँ पे आप main function बुलाओगे plt.barh which is plot a horizontal bar graph, you're giving index, you're giving value और जो आप उसमें एक x error दे रहे हो, x error मतलब थोड़ा slight deviation होता है वो std1 है, okay अगर मैं चलो let's do one thing, let me show you by running without this, okay this I am removing, okay now let's run this, so automatically आपको एक नॉर्मल बार ग्राफ दिखेगा, लेकिन अगर जैसे मैं रोलिंग पीरियड के हिसाब से मैं आपको बता रहा था तो अगर रोलिंग पीरियड के हिसाब से मैं अगर आपको एक देता हूं यहाँ पे कि इसमें थोड़ा एरर दिखाओ कि देर आर चांसेस कि ये इतना % बढ़ जाएगा, जैसे जो वैल्यू से जो शेयर की वैल्यू 5 रुपीज है वो 0.8 से डिविएट हो सकता है, ये मुझे विजुअलाइजेशन करके दिखाओ ताकि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो इसमें पैसा लगाना शुरू करें। फिर फॉर एग्जांपल जो 7 रुपए का शेयर है वो रोलिंग पीरियड में हमारा 1 रुपए का एडवांटेज दे सकता है, तो उसको दिखाओ। तो ये करने के लिए वी विल जस्ट पुट अ स्टैंडर्ड डिविएशन एरर ओवर हियर कि भाई ये एक्स एरर है, इतना बढ़ सकता है। सो यू कैन से दैट ऑलरेडी इसका इतना है, ये यहां से इधर तक डिविएट हो सकता है, दैट इसका भाव यहां से यहां तक आ सकता है इफ यू इन्वेस्ट टुडे, इसका यहाँ पे बढ़ सकता है, इसका यहाँ पे बढ़ सकता है। So this is blue one is first, but if you try to invest more, it can increase from year to year. Understanding, guys? This is little conceptual on from, and I'm using a live example. Is it understandable for everyone? समझ रहा है? Anybody who puts money in shares and everything? Yes sir, I Yes, put. sir. समझ रहा है ना रोलिंग पीरियड की यहाँ पे इतना है, मैं इसको लाइक यू जस्ट शोइंग यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज रेवेन्यू। मैं अच्छा स्कैम 1992 सबने देखा होगा। Yes sir. Yes, Okay. sir. तो उसमें क्या करता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन हु कीप द मार्केट अप एंड वन हु कीप्स द मार्केट डाउन। डू यू नो व्हाट इज द की एस्पेक्ट्स, उनको क्या बोलते हैं? Bulls and bears sir. बुल्स एंड बेयर्स, एग्जैक्टली। सो अगर मैं बुल हूं, ओके बुल, तो आई विल ऑलवेज कीप द मार्केट हाई ऑल्दो आई डोंट हैव मनी और आई डोंट हैव। एग्री? Yes sir. ओके सो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको लालच दिखा रहा हूं यहाँ पे कि बॉस पुट द मनी, आई एम शोइंग यू, दिस इज नॉट रियल टाइम, ये मैं फीडेड दिखा रहा हूं उसे, जस्ट बिकॉज आई वांट दैट पर्सन शुड इन्वेस्ट एंड आई शुड गेट रेवेन्यू। ओके
So again, by this, just try to learn. Never get into anybody insurance. If you meet any insurance guy in life, trust me, never ever get in conversation with that person, because always there's a loss. This insurance peoples are so perfect. वो पता देंगे. Like this is my personal experience. I got in conversation with इंश्योरेंस गाय. उसने मुझे उतने टाइम में कंफर्म बता दिया कि मैं कभी भी मर सकता हूँ. Okay, so this is a very, like, these guys are, that's the reason they are market, their insurance finance domain is always up in the market after telecom. Okay, number one is telecom. I'll tell why telecom, because कितना भी crisis हो जाएगा, telecom will always be functional. Okay, so that's my personal opinion, nothing to do with us. You all can have your own personal opinions. This is just for an example that I have taken. Okay, so next we'll go for multi-serial barga. So basically you may have, say, again taking the shares perspective only, आप ऐसा दिखा सकते हो कि आपके पास 3 type of shares हैं और वो से मंडे को ऐसा दिखा रहा है, ट्यूसडे को ऐसा दिखा रहा है, वेडनेसडे को ऐसा दिखाएगा, थर्सडे को ऐसा दिखा रहा है, फ्राइडे को ऐसे. सो यू गेट एन एनालिसिस की 5 वर्किंग डेज में मेरे 3 शेयर्स हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट द कंपनी विल टेक डिसीजन कि मुझे कौन सा बेचना है और कौन सा रखना है. सो अगर फॉर एग्जाम्पल नारायण, आर यू हियर नारायण? सो जस्ट टेल मी कि यहाँ पे तुम्हें कौन सा, फॉर एग्जाम्पल ब्लू, ग्रीन एंड रेड, इन तीनों में से कौन सा कंसिस्टेंट दिख रहा है? So green. How you say that? So as green is performing consistently, like in A and B, it is almost the same. C, it has decreased, and in D, it has increased a little bit, and in E, it has grown to the highest. Yeah, right. So let's put it this way. अगर आप blue को consider करो पहले, okay? How do analysis? You are right, Narayan, but see, I'll tell you, explanation perspective कैसा होता है, how you make convince someone, okay, तुम्हारे stakeholder को. You say that, sir, if you see blue one, blue has a decreasing ratio that is repeated n number of times. For example, it is decreased on Monday also, Tuesday को it is on peak, but Wednesday, Thursday, Friday ये नीचे ही है. So it is not good. We should not invest more in blue, okay, because it's not giving good returns. Sir, if you go on green perspective, you see there's a hike on Monday, there is Tuesday को, but obvious by default क्योंकि blue height पे है, green वाला share नहीं दे रहा है हमें, okay. But again, it is neutral to our red share, okay, red perspective of share. Again, if you see, there is one downfall, okay, one downfall for green on Wednesday, but again it is taking up notch on Thursday and Friday. So for me, green is the best suitable क्योंकि ये गिर भी रहा है but ये simultaneously increase भी बहुत हो रहा है. So it is just one day that is it is going down, और एक दिन जब कम जा रहा है तो हम उस दिन नहीं बेचेंगे. We'll see a slight decrease on next 2 days and then we'll sell it off. बट अगर रेड देख रहे हो, रेड कंसिस्टेंटली सिर्फ एक दिन ही बढ़ रहा है, बाकी सारे दिन वो नीचे है, तो इट इज परफॉर्मिंग रियली बैड. So on this analysis, again, Narayan said the right thing, but he said in one way, okay, but how do I convince my customer? Okay, मैं customer को यकीन कैसे दिलाऊं कि भाई whatever this is right, you have to invest, and I will make that 50%, जो 50% उसको लग रहा है, 50% को 100% कैसे convert करूंगा, by this way, wherein I make him convince, उसको बता दो कि भाई green is performing a rockstar, like it is a rockstar personality, अभी पैसा लगा लो नहीं तो फिर चला जाएगा हाथ से. Okay, so this is how you do. So multi series में क्या कर रहे हैं ना, हम कुछ नहीं, हम उसको ना एक slight deviation दे रहे हैं, like 0.3, okay, index plus 0.3, और बाद में मेरा जो ये देखो, ये जो first है, first में मैंने index में कुछ नहीं लगाया. This is the blue perspective, okay, this is the blue perspective, okay. उससे थोड़ा plotting डिफरेंट होना चाहिए, लाइक 0.3 परस्पेक्टिव से इधर आना चाहिए. तो उसको मैंने क्या किया है, बीडी का वैल्यू दे दिया, विच इज 0.3. ओके, आई हैव वैल्यू 1 फॉर blue, value 2 for say green, and value 3 for my red. Okay, and then I'm trying to deviate it on plotting perspective. तो जो B से 1 perspective है, तो यहाँ पे मेरा जो ये लाइन है, okay, this is printing over here. फिर मैंने क्या किया, उसको 0.3 से थोड़ा deviate किया from the index. Okay, so how it will be plotting, this is over here, थोड़ा slight हटके एक साथ इधर आएगा. that is the series that is getting printed. और जो मेरा last red में उसको into 2, मतलब 0.6 index plus
2 into 0.3 0.6 से वो डिविएट कर लेगा, ओके, और से मतलब 0.6 स्पेस आगे, that's the reason it is printing red over here, and it will plot based on that. और white text में ऑटोमेटिकली वो ABCD उसको 1.5 1.5 के स्पेसेस पे इंटू 1.5 इंटू 0.3 के स्पेस से वो तो एक इधर आएगा, फिर 1.5 इंटू 3 का स्पेस छोड़ के B इधर आएगा, C इधर आएगा, D, तो ये हमेशा रेड पे ही इंटैक्ट है. So this is how you try to use serial bar graph. Okay, serial bar graph में you try to, like when you use in industry, when you try to convince someone कि आप कंपैरिजन ले रहे हो कि why which one you should go ahead, वहां पे आप सीरीज बार ग्राफ यूज कर सकते हो. सेम इन अदर टेक्निक मल्टी सीरीज बार ग्राफ भी यूज कर सकते हो. दिस लुक्स मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज जब आपका डेटा एकदम हाई पिच लेवल पे होगा, लाइक एकदम कंटिन्यूअस आ रहा है, वहां पे मल्टी सीरियल यूज करोगे. और मल्टी सीरीज कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे आपका डिस्क्रीट है, लाइक यू हैव से फॉर एग्जांपल students, okay, who is performing great, how which batch is performing good, like SY अच्छा परफॉर्म कर रहा है, TY कर रहा है या SY कर रहा है, तो वहां पे आप नॉर्मल मल्टी सीरीज बार ग्राफ विद pandas डेटा फ्रेम यू कैन इम्प्लीमेंट. सो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, समझो सीरीज 1 है, सीरीज 1 दे दिया है, सीरीज 2 दे दिया है, सीरीज 3 दे दिया है, ओके, एंड आई एम ट्राइंग इट टू प्लॉट based on what, based on based on the data that has been that it is throwing. So basically क्या है, 0 में कितने हैं, 1 में कितने हैं, 2 में कितने हैं, 3 में कितने, 4 में कितने, जितने काउंट्स है वो उतने हिसाब से दे रहा है. So basically if you see 0 में यहाँ पे कंडीशनल है, एक सीरीज में जैसा दे रहा है कि that is trying to print it. So let's run this. So we are giving kind as bar, ओके, एंड वो पूरा एनोटेट करके उसको दिखा देगा कि सीरीज 1 का है वो ब्लू है, दैट इज परफॉर्मिंग से 1, तो बेसिकली ये 1 पे है, ओके. एंड देन इफ यू सी सेकंड में मैंने 3 दिया है, तो ब्लू जाके 3 पे पिच करेगा. देन आई हैव गिवन 4, तो ये जाके 4 पे रुका हुआ है, ओके, लाइक दैट. सो बेसिकली हर एक नोटेशन को वो दिखा रहा है. जो ये एक लाइन है 1 2 3, so 1 2 3, so this is 1 2 and 3, so like this it is plotting. So अगर आपको एक like if you want to do visualization based on department, so you can use this using data frames. The same which is stacked bar graph, again एक के ऊपर एक, it will be stacked. So in that case you will just give assign your series, okay, and after that you will give some range which is say from 0 to 3, which is total 4. Axis दे दोगे 0 4 0 15, okay, यहाँ पे 15 तक रहेगा, okay, and then you are giving color RGB bottom series 1 और bottom series 1+2. तो ये कैसा रहेगा, बॉटम में क्या होगा ना, ये मैंने जो फर्स्ट डाला है दैट इज रेड विच इज स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है. बट अगर मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे में बॉटम दे रहा हूँ, बॉटम में क्या है, सीरीज 1 दिया है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला इसमें प्रिंट होगा सीरीज 1 में, उसके वो बॉटम है, तो इट इज ट्राइंग टू गिव एन एनोटेशन कि बॉटम नीचे सीरीज 1 प्रिंटेड है, उसके ऊपर तुम्हें करना है. फिर नेक्स्ट में क्या होगा, जहां पे मुझे ग्रीन है उसको मैंने क्या दिया, बॉटम सीरीज 2 और उसके नीचे सीरीज 1 है. सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द लाइक द सीक्वेंस आल्सो कि सीरीज 2 पहले है, उसके नीचे सीरीज 1 है, ओके. सो like this you will mention the bottom aspect and then you are just giving an index out over there कि ये फेब है, जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल है, ओके. So now let's just run this, you will get to know. So this is the stack bar graph. तो stack bar graph बनाने के लिए सबसे important aspect is these 3 things. उसको आपको एकदम, अगर आप सीरीज 1 और 2 कर दोगे तो वो एरर थ्रो कर देगा बिकॉज उसको मालूम नहीं पड़ेगा ढंग से, ओके. So this is your multi series stack bar graph. Then say we have pie chart. So pie chart, what it will do, pie chart will take directly matplotlib, labels दे दिया Nokia, Samsung, Apple, Lumia, and after that I'm giving respective values corresponding to the labels, okay. फिर मैं उनको कलर्स दे दूंगा कि बेसिकली जो नोकिया है वो ग्रीन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, येलो में होना चाहिए, लूमिया ब्लू में होना चाहिए, ऐसा वो. और बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम प्लॉटिंग अ पाई, प्लॉट डॉट पाई, जहां पे मैं क्या दे रहा हूँ, वैल्यूज दे रहा हूँ, लेबल्स इज इक्वल टू लेबल्स, ओके, क्योंकि मैंने लेबल्स दिया है, इट शुड शो द लेबल. आई कलर्स की जगह कलर्स दे दिया है, okay. So basically it will load labels, values and colors over here, and then I'll plot it on axis that is equal. अब why I'm giving equal, because वो intact होना चाहिए वहां पे, ये ऐसा नहीं कि अलग अलग, नहीं तो print हो जाएगा वो. So that's the reason it will give a spherical circular pie chart, okay. Then
if you want to make it little bit more advanced level में complexity increase करना है, so what you can do is you can use a explode function. Explode function use करोगे ना, और फिर उसको एक angle दे दो, strata angle, okay, that is 180. so ये जो strata angle है, it goes from 0 to 360, इतना डिग्री होता है, सर्कल 0 से 360 घूमता है, राइट. सो हम लोग 180 पे उसको स्ट्रेटा एंगल दे देंगे और एक्सप्लोड करने बोलेंगे, मतलब वो पार्ट बाहर निकलना चाहिए. इफ यू सी इन दिस, ये पार्ट बाहर निकलना चाहिए. सो वंस वी विल रन दिस, एक्सप्लोड का मैंने दे दिया 0.3000, तो एक पार्ट है वो 0.3 से डिविएट हो जाएगा 0 से. तो ये जो 0 है ना, ये 0 है मेरा सेंटर, यहाँ से 0.3 वो पीछे की तरफ आ जाएगा. ओके, so this is how your explode function works. जब आप explode करोगे, it will come out. Okay, so this is how your overall like basic, we can say, that is used on daily basis. Okay, when you're using free sources like matplotlib library se leke, people try to convince their customers when they work on the data, what are the outcome from the data. From that outcome they try to show this way. Any doubts, guys? Anybody? No, sir. I hope everybody is understanding properly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so should I move ahead? Yes, sir. Okay, Yeah. so I have brought one use case. Okay, मैं एक matplotlib का use case आपके साथ discuss करूँगा. We'll go little fast, okay, because we still have a lot to finish. We have linear regression also to do, फिर logistic करेंगे. Okay, so ये सारे चीज, and I want linear regression to be done because मैंने linear regression में I'll show you the difference between actual and predicted values. Because you know, I have found many in बहुत सारे जगह पे internet पे you go and search, there is very less places, I mean very few that will show you actual कि मेरा actual value ये है और मेरे model ने ये predict किया है, वो कम लोग दिखाते हैं. So and that is really the best learning part which you can get on linear regression aspects. Okay, so let's take this एक ये है. So basically let's connect. I've clicked on this Dropbox, तो ये connect होगा. So यहाँ पे मैंने एक house price लिया है just to understand कि अगर मेरे को कहीं पे कुछ recommendations करने हैं तो कैसे होंगे. So let's do one thing. I'll try to upload the houseprice.csv file. Okay. Again, let's S.I.A. workshop. Matplotlib. I have house price. Here we go. So this is getting loaded. Okay. Yeah, we have this. Okay, so this is outside, so content.houseprice. Okay, done, intact. Okay, so now what I'm doing, ipython.core. Okay, import interactive active shell, and this is basically when you're learning, when you're loading this on cloud, वो use करता है, like आपका जो भी है वो नीचे आ जाना चाहिए. Okay, so this is a basic, you can ignore also. Okay, it's just an interactive shell that is getting activated. Nothing to do. Collab में already है, because I was running this on my personal machine. That's the reason it is showing like that. So we are taking pandas seaborn. Okay, यहाँ पे मैं matplotlib के पहले seaborn बुला रहा हूँ क्योंकि that's the secondary. Okay, and then I have matplotlib dot pyplot and I'm putting it on inline. That means ये इसके नीचे ही आना चाहिए. Okay, now I'm taking housing. I'm loading the data using read.csv. So कल हम लोग ने देखा था CSV extension को, which is known as comma separated, is using pandas. We use pd.read_csv. By this method we load the csv file, and then let's run this. Okay, so this is successful. और अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, want to see कि ये हुआ है कि नहीं, तो हाउसिंग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा कर देगा. ओके, इफ यू सी इट इज ट्राइंग टू लोड. अब यहाँ पे आप डॉट हेड डाल सकते हो. ओके, पुट डॉट हेड. ओके, ऑटोमेटिकली तो ये फर्स्ट 5 रो दिखाएगा. और अगर आप नीचे से देखना चाहते हो, इट विल शो फ्रॉम योर टेल, इट विल शो फ्रॉम बिलो, नीचे से 4 दिखाएगा. ओके, एंड देन still you don't want to see 5, you want to see 10, just put 10 over here. तो नीचे से 10 values उठा लेगा वो. So this is so easy to understand, like it is showing 10 rows in 81 columns total. Okay, so same. Okay, and if you want to just understand कि कितने columns है, you have to print, just put housing.columns, automatically वो दिखा देगा. And I'll show you this. This is like housing
डॉट, ओके, तो ऑटोमेटिकली सब दिखाएगा. So if I go columns, automatically it will show. Combine underscore first, convert. If you want to convert a data type also, you can convert using this. So this is like this. तो ये automatically housing के जितने भी data frame में हमारे columns है वो दिखा देगा. Now let's go to exploratory data analysis. There are two types of exploratory data analysis. One is univariate जो कि एक ही column पे होता है, और दूसरा है bivariate which wherein you're taking two columns into consideration या फिर more than two columns. Okay, so univariate में हमने क्या किया, SNS is seaborne. Okay, SNS seaborne. Okay, यहाँ पे मैं distance plot ले रहा हूँ. That means it will show me कि ये कितना distance ले, मतलब how it is going up and right. Okay, distance housing dot LOT. Okay, so I have taken one column which is housing dot LOT. Okay, that is lot area. So let me print this first and show you कि इसमें क्या data है. Okay, so code. So if you see, this is having a numerical data over here. Okay, numerical data पूरा print किया है. So I'm trying to take this whole column. Okay, inside this, and मैंने KDE को false रखा है. So KDE is kernel density estimate. Okay, I'll show you. First let's run this on false mode और इसके बाद में हम हटा के भी run करेंगे. Okay, so let's run. तो automatically ये दिखा दिया है कि it is lying more towards. So अगर मैं बोलूँगा is this data skewed or not? What is your, is this normally distributed? Anybody mathematics background or statistical background? Is this normally distributed? It is, or is it skewed? Anybody? Sir, it is skewed. Skewed, right? Because ये normally distributed नहीं है, सारा data एक side पे. Now let me understand and make this more clear. Okay, see the difference. कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट है ना, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पे वो जाके उसको प्लेस कर रहा था. सो आई डोंट वांट एग्जैक्टली दिस, आई वांटेड टू सी इंटैक्ट इन द बार ग्राफ. दैट इज द रीजन आई ट्राइड टू पुट KDS फॉल्स. तो KDS फॉल्स में तो वो नॉर्मली हमें क्लियर पिक्चर दिखाएगा, दैट द लाइन विल गो ऑफ. ओके, then what are the different types of housing exteriors? So basically housing exteriors में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है वो, that has been shown over here. So we are seeing, say there is a plot. Okay, plot है, plot के अंदर I am taking SNS count plot. तो basically जो भी plot होगा उसका count maintain करेगा with the run, and I am taking an exterior list over here. So exterior list क्या है, x is equal to exterior list and data is equal to housing. Okay, so this is the second method to write this. ये जो लिख रहे हैं ना ये हाउसिंग अंडरस्कोर, ये दूसरा मेथड है यहाँ पे ऐसे लिखने का, जिसमें x में एक्सटीरियर लिस्ट दे रहे हैं. ओके, सो इफ यू सी this over here, exterior list, if you get to know, you can see one of here. यहाँ पे exterior list करके आपको ये मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा. सी exterior list first, exterior second. Okay, like this. So they are trying to fetch. तो हमने exterior list first लिया है. So let's put it over here, housing dot exterior list 1. Okay, तो ये सारे जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स का काउंट मेंटेन करेगा यूजिंग काउंट प्लॉट. एंड आफ्टर दैट इट विल से plt.set xtix लेबल पे क्या डालोगे, xtix get plt.xtix, जो कि है ना ऑटोमेटिकली काउंट के हिसाब से वो लेगा. तो बेसिकली जो हमारा xtix ये x में जो है, ओके, x के अंदर जो जो नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा और उनका काउंट y पे आ जाएगा. ओके, सो एक्सटीरियर लिस्ट में सबसे ज्यादा vinyl ISD is the one that is dominating. Okay, so this is shown over here. So you can say that you can take, अगर तुम्हें clustering करना है कि for example you run a business of interior और ऐसे exterior designing का आपका business है. Okay, आपके पास कोई customer आएगा तो customer, जैसे if customer is like a very known personality, that person will come and say कि show me something that you have good inside your organization, सबसे best. तो आप क्या करोगे, आप इसको ये टॉप 3 दिखा दोगे, टॉप 3 या 4. ओके, कि सर मेरे इधर सबसे ज्यादा ये बिकता है. ओके, सो दिस एनालिसिस कैन actually come, like you can come to know, a business can come to know that what exactly is trending in their business. Okay, so this plot will give you analysis for that.
सो बाई प्लॉट एनालिसिस कैसे करेंगे, हम दो चीज को लेके उसको प्रोसेस करेंगे. सो say does the price of a house depend on the location or lot area. Okay, so उसको हम लोग एक रिग्रेशन एनालिसिस के हिसाब से प्लॉट करेंगे. सो एसएनएस ओके हैज अ रिग्रेशन प्लॉट. ओके, रिग्रेशन प्लॉट जहां पे हमने एक्स में वैल्यू डाला है लॉट एरिया, वाई में डाला है सेल्स प्राइस जस्ट टू गेट द प्राइस ऑफ इट, एंड डेटा में हाउसिंग डेटा फ्रेम से वो उठाना चाहिए. जस्ट लेट्स रन, वी आर टेकिंग 2 एंड वी आर ट्राइंग टू रन. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, इफ यू सी यहाँ पे बहुत सारे आउटलायर्स हैं. ओके, आई गेस मैंने कल आउटलायर्स बताया था आपको. कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर आउटलायर्स? एनीबॉडी हु कैन रिपीट और जस्ट कॉल ऑफ? सॉरी, extreme behavior of data. extreme behavior of data. Yeah, right. So that's how you're over. And I gave example, best example for an outlier is Hotstar. Okay, so that is where if you are a marketing genius, every marketing genius will take example of OTT platforms to explain outlier, because वो सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पे आउटलायर आपको मिलता है हमेशा. OTT प्लेटफॉर्म ही एक है जहाँ पे, and in life also I'll tell you best example, whoever in your exam or in your interview sections, anytime you get across someone who is asking explain outliers, tell that what like it's the extreme point that behaves unconditionally in your distribution, and the best example is the OTT platforms that you can give. Okay, so that's a takeaway. Okay, now what I'm doing is I'm taking house lot area और उसको मैं quantiles में divide कर रहा हूँ. Like I'm trying to understand कि ये quantiles के लेवल पे क्या क्या जनरेट कर रहा है, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि बिहेवियर क्या है इसका. सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 0.5 का ले रहा हूँ विच इज 50th परसेंटाइल, फिर मैं 95 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल को देख रहा हूँ कि इसके वैल्यूज क्या क्या है. एंड देन वंस आई जस्ट अ सेकंड, ओके, once I'm running this I'll get to know कि 50th परसेंटाइल में वैल्यू है 9478, 95th पे 17401, 17,401 उसका नंबर है. एंड देन यू सी देयर इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन जस्ट 0.4. ओके, 0.4 वैल्यूज में सीधे 37 पे आ जाता है, फ्रॉम 17 टू 37. तो बेसिकली कैसा है, ये इधर है. ओके, दिस इज योर से 95th परसेंटाइल 17 है ना, 17401, दिस इज योर 95th परसेंटाइल, और आपका सीधे 99th परसेंटाइल इधर आ गया, एकदम एक्सट्रीम. तो इतना गैप है इसमें. ओके, सो व्हाट यू विल डू इज यू ट्राई टू नॉर्मलाइज दिस सो दैट ये नॉर्मलाइज हो जाए. तो नॉर्मलाइज करने के लिए करोगे आप हाउसिंग सब्स्टिट्यूट बना रहे हो, जहां पे आप हाउसिंग का लोकेशन ले रहे हो. ओके, हाउसिंग लॉक. ओके, आई लॉक भी होता है, लॉक भी होता है. ओके, एंड देन यू आर टेकिंग हाउसिंग लॉट. ओके, हाउसिंग लॉट. ओके, और वही हाउसिंग लेना है विच इज लेस देन क्वांटाइल 9.5. तो मतलब 9.5 मतलब 17,401 के नीचे के जो पॉइंट्स है वो ही मेरे को इस डेटा फ्रेम में चाहिए, विच इज हाउसिंग डॉट सब. ओके, तो हाउसिंग डॉट सब अगर अभी जो आ गया है, लेट्स चेक आउट इन अनदर वे ऑल्सो. सो लेट्स रन दिस. हाउसिंग डॉट सब आ गया. ओके, जिसमें दैट शुड टेक लेस देन. ओके, लेस देन 95 कौन, मतलब 17,401 से नीचे के सारे इसमें आ जाने चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग अंडरस्कोर सब डॉट डिस्क्राइब. ओके, डिस्क्राइब करूंगा मैं तो ऑटोमेटिकली मुझे वो पूरा एनालिसिस दे देगा. तो इफ आई सी हाउसिंग सब में सारे ले लिए हैं, हाईएस्ट कितना है 1460. ओके, इन आईडी. एंड इफ आई गो एंड से lot area now, so let's check lot area first. Housing sub, yeah, housing sub. See 17400 the highest, because आपका 95th percentile में 17401 है. So the maximum value, see I don't have to write large number of codes compare, I just describe function gives me the highest value. What is the total count 103, what is the mean standard deviation एक बार में हमें पता चल जाता है. Okay, so now I can confirm कि मेरा जो equation है
ये पाइवोट टेबल कर चुका है, दिस इज डूइंग पिवोट, ओके, पाइवोटल टेबल हो गया है, दैट इज इग्नोरिंग, मतलब ये क्या कह रहा है, मेरा जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 से 95% से 94% तक ही ले रहा है, 95 से आउटलायर्स को निकाल रहा है, बिकॉज दे आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, ओके, दिस इज हाउ यू डू, this is how you ignore your outliers, okay, another way using matplotlib in your real world scenarios, okay, now what you're doing, you're just plotting डेटा फ्रॉम हाउस सब। अब यहाँ पे आपको रिग्रेशन एनालिसिस बहुत अच्छे से दिख जाएगा, सो यू कैन सी देयर इज अ लाइन दैट इज पासिंग बिटवीन, ओके, ऑल द पॉइंट्स and it is covering, okay, there is a slight difference which is coming over here, okay, and now here if you see based on this there is one outlier which is over here, so again you can again remove that also, but again that makes no point because थोड़े errors होने चाहिए। क्यों errors होने चाहिए मैं बताता हूँ। If you run a model and your model is only learning on one aspect, it gets biased. See? Can we mute him? Okay, thank you so much. Okay, so how do we do it? So basically what the scenario is, अगर आपका मॉडल सिर्फ सही चीजों से ट्रेन होगा तो वो क्लासिफाई भी वही करेगा, it should learn on the error part also, जितना वो error side से learn करेगा उतना ही उसको मालूम पड़ेगा, so it can differentiate what is right, what is wrong. So basically keeping this outlier is okay, but if you see over here why we remove this outlier, because 17 से सीधा double हो रहा है वो, it's almost double, almost 95% to 90% double हो रहा है वो, so that's the reason we are trying to remove it, okay. So now the regression plot has come and now based on that we'll try to understand यहाँ पे correlation, तो पुराने हाउसिंग और हाउसिंग सब में क्या कोरिलेशन है, that we'll try to understand, okay. So basically एक मिनट, let's बोले क्या, so जो नया है उसमें क्या कोरिलेशन 0.43 विच इज रियली लाइक 1 भी नहीं है, तो दिस कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ओके। और हम जब पहले वाला जो जिसमें हमारा एरर्स और आउटलायर्स है उनको रन कर रहे हैं तो कितना डिविएशन आ रहा है, देखो 0.26, ओके। सो दैट मींस वंस आई एम रिमूविंग, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द कोरिलेशन, मतलब वो रिलेटेबल है, इट इज ट्राइंग टू like it is going good analysis, वो increase हो रहा है, that means मेरा lot area और sales price दोनों contribute कर रहा है if I'm removing the outliers, so this is a good sign that it is increasing. ये decrease होता तो हमें लगता है कि भाई error या accuracy में ये अच्छे से नहीं दिखाएगा, okay. Now what we do is we try to do multiple plot analysis, okay. Multiple plot analysis में आप क्या करोगे, we try to take in one line, okay, this is say square feet, okay. square feet में मैं सिर्फ पूरे डेटा में से square feet ही निकालूंगा, कैसे, column name, I'm declaring a column name for column name, okay. column name for column name in housing dot columns is if sf is in column name, अगर sf is in column name है तो वो उठा के मेरे को sf calls में डाल दो, तो it will go search in कि एक कॉलम है जो SF नाम से है, अगर है तो उठा के उसमें डाल दो, तो हम लोग उसका लेंथ देखेंगे, तो फर्स्ट लेट्स प्रिंट व्हाट इज SF कॉल्स, ओके सॉरी, कोड SF अंडरस्कोर कॉल्स, सो सी जहां जहां SF कॉल्स हैं वहां के सारे उठा के लोग ने लाके रख दिया है, ओके। सो जो कॉलम में आपको SF मिला है वो सारे कॉलम्स को कॉलम का नाम लाके इसने डाल दिया, सो in one line of code, for example, if you want to find one single pin trace in the whole data, you can use this technique, one line technique, wherein calls for column, okay. So हर column में वो जाके check करेगा in housing dot columns of that data frame, if he finds this word SF it will take that column, okay. So इतने, that means the length of it is there are nine you can say 9 columns that are having SF, okay. अब वो सारी चीजों को हम यहाँ पे लाके प्लॉट करेंगे, so basically I'm taking a fig, okay, figure, I'm giving an axis, जैसे मैंने बताया था आपको एक फिगर बनता है फिर एक्सेस बनता है, okay, and then प्लॉटिंग होती है, प्लॉटिंग में सब प्लॉट्स बनाएंगे and we are giving by default we are giving n rows and n columns, मतलब 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाओ,
ओके फिगर साइज हर एक मैट्रिक्स का होना चाहिए 10x10 एंड देन आई एम रनिंग द लूप मैं क्या कर रहा हूं मैं लूप रन कर रहा हूं ऑल द 9 बिकॉज वी हैव 9 कॉलम्स तो 3x3 के मैट्रिक्स में सब दिख जाएगा हमें ओके सो फॉर आई ओके फॉर आई इन रेंज that starts from 0 and it should go to length of SF calls which is 9 तो ये 0 से 9 तक रन करेगा जहां पे मैं एक रोज को डिवाइड करूंगा मतलब multiple dividing with that should create a matrix and then I should give a based on columns I will try to do percent on it okay like divide okay and based on that I will try to make a matrix and then usko मैं AX axis में rows and columns में उसको filter out करूंगा and it should understand that once which is double divided okay mod एस्पेक्ट पे मैट्रिक्स फॉर्मेशन के लिए और जो डिवाइड हुआ है वो कॉलम्स में जाना चाहिए इट विल टेक इट इनटू द रो एंड बेस्ड ऑन दैट प्लॉट एसएनएस डॉट रिग्रेशन प्लॉट में वो क्या करेगा एक्स वैल्यूज में पर्टिकुलर SF calls 1 that means I that is first column okay because SF call has 9 columns okay will compare with sales price only तो मतलब आपका जो हर एक कॉलम है जो SF जिसमें मेंशन्ड है उसका I लेगा मतलब इट विल टेक कॉलम नंबर 1 ओके कॉलम 1 ट्राई टू एनालाइज विद सेल्स प्राइस column 2 sales price column 3 sales price and based on that it will show from the housing data and your axis is given as AX okay based on that you'll run and you'll get a subplots it will take little time yeah so we see we have a regression तो अब जो आपने ऊपर किया है यहाँ पे ये वाला ये सिनेरियोस ये एक मल्टीवेरिएट पे किया है you get so many aspects यहाँ पे आप कितने जगह पे ये सारा चीज लगा सकते हो if you see so you don't need to apply anything यहाँ पे इधर भी नहीं अप्लाई करना है यहाँ पे भी on this aspects you have to ignore 60,000 के ऊपर वाला जो है वो इग्नोर करना पड़ेगा यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इधर भी आपको करना पड़ेगा यहाँ पे तो ये पूरा skewed ही है if you see there is aligned on zeros पे बहुत सारे values है so like this you can in just few lines of code you can analyze the whole multiple regression models okay so this is out over here and then same exterior list का value count देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कितना है so basically vinyl LSD has 515 records that are coming similarly like this इसको आप head tail के हिसाब से देख सकते हो total value counts मिल जाएगा same if you want to see outliers को देखने के लिए एक subplot होता है that is known as box plot okay so box plot is also known as viscous plot okay so viscous is nothing but this ये जो एंटीना टाइप में हैंडल करता है बॉक्स प्लॉट का वो होता है so this is your क्वांटाइल्स यहाँ से यहाँ तक दिए होता है ना ये 25th क्वांटाइल ये 50th क्वांटाइल और 75th क्वांटाइल combination of this is also known as interquartile range statistical aspects comes from mathematics and statistics background okay so box plot को बनाया था विस्कर ने तो विस्कर ने बनाया था इसलिए उसका दूसरा नाम विस्कस प्लॉट भी है and then it will show that if you see this black dots that is the notation that they have outliers so again box plot is a visualization tool that can help you understand कि कौन से visualization में outlier सबसे ज्यादा है okay so this is how you take into notation so basically आपका ये पूरा scale है if you see this ये scale perfect है for cement yeah सीमेंट है दैट मींस सीमेंट हर जगह बराबर यूज हो रहा है यू कैन से ओके सो दैट इज हाउ यू टेक और अभी अगर आपको लाइक रादर देन प्लॉटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर डू फॉलोइंग तो जैसे आपको अगर प्लॉटिंग नहीं करना है आपको कम दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो आप टॉप 3 एक्सटीरियर्स ले लोगे जैसे ये एक्सटीरियर इतने सारे हैं यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हम इसको और अच्छे से कैसे दिखा सकते हैं टेक टॉप 3 एक्सटीरियर्स जिसमें आप क्या करोगे हर एक का वैल्यू काउंट्स बना दोगे और उसके वैल्यू काउंट्स जो हमने ये देखो ना हाउसिंग एक्सटीरियर डॉट वैल्यू काउंट जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया है उसका सिर्फ हेड लेना है टॉप 3 ओके सो आई एम पुटिंग हेड टॉप 3 तो ये क्या करेगा खाली स्टार्टिंग के 3 उठा लेगा जो भी टॉप रहेगा फिर उसमें क्या करेगा उसको मैं एक लिस्ट में डाल दूंगा तो लिस्ट बेस्ड ऑन इट्स इंडेक्स अगर और फिर उसको अब मैं अगर डालूंगा तो इट विल टेक एज अ लिस्ट तो ये लिस्ट में आ गया है टॉप 3 बेस्ड ऑन दैट आई एम मेकिंग अ न्यू एक्सटीरियर अंडरस्कोर न्यू उसमें डाल रहा हूँ वहां np वेयर
हाउसिंग एक्सटीरियर लिस्ट इज इन टॉप एक्सटीरियर, मतलब हाउसिंग इंटीरियर लिस्ट के ये जो 3 है, ओके, ये 3 हमारे हाउसिंग एक्सटीरियर लिस्ट 1 से आ रहे हैं, वो प्रेजेंट है हमारे टॉप 3 में कि नहीं, अगर वो है तो उसको प्रिंट करना है बस एक्सटीरियर न्यू में। तो क्या कर रहे हैं, मैंने एक पिवोटल बनाया टॉप 3 एक्सटीरियर, ओके, उसमें से निकाला है, वो 3 को प्रिंट करो और बाकी जितने रहेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट 3 सबको अदर्स में डाल दो। ओके, तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट 3 है ये लोग टॉप नोटेशन, जैसे ये जो फर्स्ट 3 है, ओके, 1 2 3, ये तो मेरे टॉप ट्रेंडिंग है, ओके, दिस आर माय टॉप ट्रेंडिंग्स, इनको मैंने एक सेपरेट बना लिया और बाकी जितने हैं ये, इनको मैंने अदर्स नाम दे दिया है। from where, comparing from the list of exterior list 1, okay, exterior first list, ये लिस्ट से उसको कंपेयर कर रहा हूं, इज इन टॉप 3 में ये 3 है, इन 3 को उठाएगा, ओके, इट विल मेक एक्सटीरियर लिस्ट और बाद में बाकी को अदर्स कर देगा। सो इफ यू नाउ रन दिस यू विल गेट, तो आपको ना एक क्यूमुलेटिव कैटेगरी मिल गई है कि अदर्स एक है जहां पे 503 ऑब्जर्वेशंस है, विनल एसडी है जो 515 है, एचडी बोर्ड इज 222, मेटल एसडी इज 2020। उसको आप अगर यहाँ पे प्लॉट करोगे इट विल शो यू सो नाइसली। तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा आउटलायर्स अदर्स में दिख रहे हैं आपको। सो if this is more cleaner rather than showing this, you just take some little sample, okay, उसको क्लब कर दो, make it into categories and just show it off. So this way you can say that sir top trends हमारे ये हैं जहाँ पे others में बहुत सारे other categories है, but I have these 3 also that is trending a lot in my business, okay. And then let's check from a price perspective, old से new का, okay. So basically does the relationship between house exterior and price change depending on how old the house is? तो ये भी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओल्ड हाउस में एक्सटीरियर का ज्यादा पैसा खर्चा होता है या नए में होता है, ओके। सो दैट एनालिसिस विल से दैट हाउस न्यू, एक नया कॉलम बना रहा हूं, ओके, जहां पे मैं np.where हाउसिंग ईयर बिल्ट, जो हाउसिंग ईयर बिल्ट कॉलम है उसमें अगर जो भी ग्रेटर देन 2000 है ईयर, वो नाम होगा न्यू और बाकी जो होगा वो ओल्ड होगा। तो जो वैल्यूज 2000 के ऊपर होंगे उनको मैं नया न्यू नेम दे दूंगा और बाकी सबको ओल्ड दे दूंगा। सो इफ यू रन दिस नाउ यू कैन सी दैट यू हैव क्रिएटेड। फिर बाद में हम देखेंगे कि जो न्यू हाउस कॉलम है, ओके, let's print this also, housing okay dot new house, so dot new house. So if you see you have old new, तो अगर वो उसका ईयर 2000 से ज्यादा है, even 2000 is considered into old, which is more than 2000 उधर new हो गया है। and now let's check कि ये कितना है, what is the count. So if you see dot value counts, old है वो सबसे ज्यादा है 1096 and the new ones are 364। अब उसको मैं कुछ नहीं करूंगा, जस्ट टू गिव अ कंपैरिजन मैं उसको sns.boxplot में डाल दूंगा जहां पे x का वैल्यू न्यू हाउस रहेगा, ओके, क्योंकि वो मैंने पूरा कॉलम बना दिया, और उसका सेल्स प्राइस रहेगा। ह्यू में क्या करूंगा, एक्सटीरियर न्यू कर दूंगा, एक्सटीरियर न्यू एज इन हमारा जो यहाँ पे एक्सटीरियर न्यू था, ओके, जो कि इस चीज में दिखाएगा कि वो विनाइल एसडी के वजह से कॉस्ट में आ रहा है, अदर्स के वजह से कॉस्ट में आ रहा है, एचडी बोर्ड के वजह से आ रहा है, मेटल एसडी के वजह से आ रहा है। तो वो मैं ह्यू में डाल दूंगा विच विल शो मी कि ये ब्लू है तो ये विनाइल एसडी है, इतना पैसा इसमें खर्चा हुआ है, मेटल एसडी है तो इतना खर्चा हुआ है, ऐसे, ओके। सो लेट्स रन दिस, तो ऑटोमेटिकली इट विल प्रिंट मी कि एक्सटीरियर में विनाइल में न्यू हाउसेस में इतना खर्चा हो रहा है सेल्स प्राइस, और फिर मेटल एसडी। सो वी कैन से दैट apart from all this metal SD and others are more dominant on new house and old house में इतना खर्चा नहीं हो रहा है, okay. Now like this you can do and then you can take an average also कि आपका जो सारा एवरेज है उसमें न्यू में कितना पैसा खर्चा हो रहा है और ओल्ड में कितना पैसा खर्चा हो रहा है। सो यू आर ट्राइंग टू ग्रुप बाय एक्सटीरियर न्यू विच इज ऑल दिस, ओके, एंड न्यू हाउसेस में न्यू और ओल्ड। तो बेसिकली दिस विल क्रिएट अ ग्राफ, एचडी बोर्ड के अंदर न्यू और ओल्ड, मेटल के अंदर न्यू और ओल्ड कितना कॉस्टेशन दे रहे हैं, ओके। सो यू विल टेक काउंट एंड यू विल टेक मीडियन ऑफ इट।
and it depends, you want to take mean or median, but center value is better when you take median. Okay, so उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि न्यू 1 है तो 198 खर्चा हो रहा है ऑन एचडी बोर्ड, मेटल में 19 है जहाँ पे 2020 है। तो कहीं भी आप देखोगे तो विद दिस एनालिसिस न्यू हाउसेस दैट आर गेटिंग बिल्ट आर कॉस्टिंग मोर ऑन द एक्सटीरियर पार्ट्स, उनमें एक्सटीरियर का खर्चा ज्यादा हो रहा है, एंड द सेम यू विल जस्ट प्लॉट इट ओवर हियर। सो यू कैन सी न्यू में आपका जो विनाइल एसडी है वो सबसे ज्यादा काउंट के हिसाब से इन्वेस्ट हुआ है, एंड पैसों के हिसाब से न्यू हाउस में you try to put you try to take more amount of money. Okay, so this was the overall use case that I wanted to take from matplotlib perspective. So आप कोई भी data को लेके you can give insightful insights to your business, or you can give it to your customer, and then on based on that he can see that how he can increase his revenue, कहाँ पे उसको काम करना चाहिए. Getting guys? Any doubts? No, sir. No, sir. Okay. Anybody is having exterior business over here? Anybody's parents running exterior business, they can take this analysis. But before that, you need to collect data also, that much. Okay. All set? Can we move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's check on linear regression. So basically, before we start linear regression, I want to understand who all know linear regression. Anybody who is aware about linear regression knows linear regression in a very... Anybody can help me out? Yes, sir. Yes, Narayan, please go ahead. It's a linear regression is a line that that is plot between scattered points, and which gives a clear idea where the it is like a mean price, or you can say the perfect line, which gives to the if we are predicting a price, then it will give a straight line between the points of the prices, and it will try to predict the how the price is reacting to the feature variables. Okay, that's nice. Anybody else wants to add up on this? Apart from Narayan, I want some fresh faces. Come on. MSc IT students. ML हो चुका है आपको. You might be knowing linear regression. Where is Nitesh Soni? Yes, who is it? Hello? Guys, come up. MSc IT students, I want you all to take part in this now. We have Nitesh Soni here. Linear regression पढ़ा है आप लोगों ने? Knock knock. Hello. Okay. Any MSc IT students over here in our class? Okay. Yeah, sir. Yeah, who's it? Sir Sangram. Hey Sangram, hi, how are you? I'm fine, sir. Can you put light on linear regression so that I can understand, and I'll catch and I'll take things ahead from there? Actually, sir, linear regression is a statistical term. It is a linear approach where modeling a relationship between scalar response and one or more explanatory variables are included. Just like one explanatory variable is called, just like I had some formula, so through which I explain you. Just like why is it if we have two variables, dependent as well as independent variables. Right, yeah. Okay, let me take. Thanks a lot. Thanks, Sangram. You just raised the notch perfectly. Let me take ahead. So basically, linear regression is a line, okay, trend line, which tries to pass from all the values that are present in your input. जैसे for example, ये मेरे सारे input values हैं. So I will try to pass a line which will be always straight, that is linear. Okay.
with less number of errors. Okay, उसका जो error है वो हमेशा कम होगा. So basically if I see, I try to plot, तो ये देखो ये लाइन है, ये एक बेस्ट फिट लाइन है, ये बेस्ट फिट लाइन गुजर रही है सारे डेटा पॉइंट्स पे विथ मिनिमम नंबर ऑफ एरर. ओके, मिनिमम नंबर ऑफ एरर, विच मींस कि आपके इसमें जो मिनिमम एरर नंबर्स यूजेस लीस्ट स्क्वायर मेथड, LSM. जो ये लाइन बन रही है, ये लाइन बनती है लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करके. ओके, एंड वी यूज टू एस्पेक्ट्स ऑफ, वी हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज ऑलवेज द फीचर. Okay, also known as feature, also known as variable, also known as predicators. Okay, so these three things, okay, like जो independent variable है is also majorly known as input, which is responsible to go inside the model, and then we get a target variable, that is a dependent variable. Okay, so combination of independent and dependent, जहां से आपका features होता है जो कि आपके ये सारे columns हैं, ये एज अ इनपुट बन के आपके मॉडल में जाते हैं. आपका मॉडल रन करता है यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, wherein it tries to see regression analysis, जहां पे continuous data आता है. Okay, and based on that continuous data you will try to analyze and show prediction, and basically you will try to predict and give a value कि for example आपका area 10/10 का है तो इसका कितना प्राइस होगा, and that price is decided by the past data that person is having. Okay, so this is how it runs. Okay, so this is linear regression. Linear regression is also having multiple aspects, like polynomial regressions भी होते हैं. तो polynomial regression क्या करता है? For example, polynomial regression में जैसे आपने लिखा है ax, okay, a1 x1 plus b1 x1. तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या करेगा? डेटा बढ़ा देगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देगा. उसमें वो क्या ऐड करेगा? a1 x1 प्लस b से a2 x2 प्लस a1 a2 ax. ओके, एंड उसका स्क्वायर या क्यूब कर देगा उसको. ओके, सो इट विल ट्राई टू डू स्क्वायरिंग और क्यूबॉइड, लाइक स्क्वायर्स और क्यूबॉइड उसको बना देगा, एंड देन इट विल टर्न आउट टू बी पॉलिनोमियल रिग्रेशन. Okay, so that is how you try to make your model more complex. उसके जो calculations होते हैं equations के हिसाब से, you try to make your model more complex. So there are n numbers: linear, simple linear regression, multiple linear regression, or and there are various parts like polynomial regression. Okay, it depends and scales ahead from use case to use case, जिसमें आपके जो data आएंगे, based on that data it will be responsible. So let's try to connect, and we will be training a basic model jahan pe our aim is to understand and see actually the difference between your actual data that is present in your data set and the data that is generated by the model that we will train. Okay, so linear regression, the data over here would go, let me load the data. Hands-on, yeah, hands-on. Linear regression, ADA, urban, yeah, data. Okay, so I have loaded two data over here. Okay, which is you can say summary of weather station location, and another is summary of weather list. Okay, weather list that is getting loaded if you see over here. So let's wait until it gets loaded, because it is almost how many rows? This much rows. Okay, so this much into this much is this totally. So let it load. Till then, can we have some questions? If you have anybody who is having any doubt, I can take up on any aspects if you want. So in linear regression, basically we are we are trying to reduce MSC, right? I have a doubt. RMS, yeah, I mean you try to Squared error, keep sir. less error. जो error metric होता है उसको जितना less रखोगे. For example, let me show this. यहाँ पे हम जो learn कर रहे हैं ना, लास्ट में देखो इसका
मीन स्क्वायर एरर 17, इट इज नॉट बिग इन नंबर, एब्सोल्यूट भी 3 है और रूट मीन स्क्वायर उसका जो आपका मीन स्क्वायर एरर का रूट है 4 है, दैट मींस इट इज वेरी लेस एंड दिस इज एक्यूरेट. सर हेलो या सर, एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल जो होगा वो लीनियर रिग्रेशन से अच्छा होगा या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन से? ओके, सो क्वेश्चन थोड़ा गलत है, लेट मी पुट इट लाइक दिस. ओके, रिग्रेशन देखो, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता है. सुपरवाइज्ड क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? नो, एनीबॉडी नोस व्हाट इज सुपरवाइज्ड? Where nearby data is involved. ओके, वी हैव अ लर्नर. ओके, सुपरवाइज्ड में एक लर्नर होता है, अनसुपरवाइज्ड में लर्नर नहीं होता है. सो सुपरवाइज्ड क्या करता है, उसको डायरेक्टेड अप्रोच मिलता है कि उसे एंड में अचीव क्या करना है. अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, एंड में क्या करना है मुझे नहीं पता. ओके, अब मैं सिर्फ सुपरवाइज्ड पकड़ता हूँ. सुपरवाइज्ड के अंदर दो टाइप ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, एक होता है रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, अनदर होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. दोनों में फर्क क्या है? एक में कंटिन्यूअस वेरिएबल्स जाते हैं और क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट रहता है, ईदर यस और नो, ईदर राइट और रॉन्ग. ओके, तो दो पर्सपेक्टिव होता है. यहाँ पे क्या होगा ना, आपका एक्यूरेसी रिग्रेशन में आरएमएससी वैल्यूज से पता चल जाता है. ओके, और जब क्लासिफिकेशन में जहां पे डिस्क्रीट होता है वहां पे आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते हो, विच फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू accuracy, precision and recall. Okay, and there is a very beautiful library called as classification report, classification underscore report under sklearn.metric. Okay, so based on that, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी आप जब बोल रहे हो, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, ये देखा जाता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए. ओके, MAE which is mean absolute error, RMSE, ओके, रूट मीन स्क्वायर एरर और मीन स्क्वायर एरर, ये सारे मेट्रिक होते हैं, वो यूज होता है रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए. ओके, इवैल्यूएशन के लिए. डज दैट मेक सेंस? ओके सर, समझा ना? And sir, क्लासिफिकेशन अलग है, होता है ना? रिग्रेशन अलग है. Any more questions? And sir, ROC curve is also used, no? यस यस यस, आरओसी कर्व लास्ट में, मतलब जब आपको इफ योर एक्यूरेसी इज नॉट गिविंग एनी कंक्लूजन, if your precision is not giving, if your F1 score fails out, आपका हार्मोनिक मीन फेल हो जाता है. ओके, एंड अगेन आई एम टेलिंग वन ट्रिकी क्वेश्चन, ऑलवेज कीप इन माइंड. इंटरव्यूज में आपको ना ट्रिक कर सकते हैं, ओके, ये बोल के कि what is a different name of harmonic mean? Does anyone knows what is harmonic mean? The other word for harmonic mean? Or they can keep that ki harmonic mean is used in evaluation, in evaluating a machine learning model. So, does anybody know this? I mean, this is really a tricky question. So, just asking. I'll give you the answer. Yes, somebody unmuted. Anybody has answer? Please let me know. Otherwise, I'll give you. Is it Pythagorean mean? no. No. That you're getting into pure mathematics. Okay, we are working on model. Okay, so basically harmonic mean होता है ना, F1 score is responsible. जो F1 score है वो harmonic mean का concept लेता है. So this is a very tricky question in machine learning world. Okay, specifically machine learning world I'm telling, not in data science. ये लोग घुमा के पूछते हैं, ये लोग पूछेंगे कि there are two types of problems in supervised machine learning, which is regression analysis and classification analysis, जिसमें हार्मोनिक मीन कोई एक पैरेलल में इंक्लूड होता है टू टेक इवैल्यूएशन, लाइक मॉडल इवैल्यूएशन. सो कौन से में होता है? तो द आंसर इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में F1 score use होता है, and that uses concept of, like, the base concept of F1 score is harmonic mean. Clear guys? समझ में आया? This is like जैसे F1 score आया तो मेरे दिमाग में आ गया कि this is the trickiest question that usually when I was getting interviewed
in a very good organization ये question पूछा गया था मुझे, so but I know the answer because all thanks to books. Any more questions, guys? Okay, all data is loaded, so please let me know. We'll move ahead then. Okay, so for linear regression, what we are doing is we are using a summary of weather seed. So weathers, we'll try to copy the path from here. We are trying to put the new path. So under content, summary of weather.csv is a folder. So let's take a bigger picture on this. So we are trying to import all the necessary libraries. Okay, so for first years, this might look really very tedious for you, okay, first years and second year, but I can do one more thing for you all. If you really want, like basics जो था मैटप्लॉटलिब वो तो आप करिए, प्रैक्टिस जो मैं आपको लिंक्स दूंगा उससे आप प्रैक्टिस कर लिए, दैट इज इनफ फॉर यू, ओके. बट इफ यू वांट टू बिल्ड मॉडल्स आल्सो, so you can just let me know. Interested guys can ping on the WhatsApp. I'll give you good resources wherein you can kickstart things on your own. No need to go and rush behind any certifications by getting emphasized. First, try to analyze on your own front. If you are feeling that yes, you are pretty much good on this, then you can take any certifications for your profile building. Okay. So anytime you can connect me, I'll help you out in that same. So import pandas as PD, import numpy as NP, and then we have matplotlib that we saw. We are also introducing Seaborn. Okay, and based on that, we will also use sklearn model. Sklearn is a library that is used for machine learning. All the machine learning algorithms are run like they are performing under sklearn library, which is known as scikit-learn library. Okay. And then we are trying to include model selection import, which is train test split. So कोई भी डेटा होता है हमारा मशीन लर्निंग में, उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं so that we can evaluate. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पार्ट ऑफ few chunk of data will go as a training, which will go inside, which will gradually go inside your you can say inside your model as an input training, and other will be as testing, which will be taken as taken for testing and evaluating your मॉडल. ओके, सो इसलिए हम वही डेटा में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स कर देते हैं. एंड देन वी हैव sklearn dot linear model which will import linear regression. Okay, and based on this we will take from sklearn dot import matrix, जो कि हमें हमारे एरर मैट्रिक्स है या फिर इवैल्यूएट करने के बाद एरर मैट्रिक्स बताएगा. एंड matplotlib dot line is just used for impacting your any visualization that should come below the cell. Okay, so that we use. So we have imported successfully. Then we have say we are making a data frame जिसमें हम लोग हमारा CSV folder को read करने वाले हैं. So we'll use pd.read CSV since it is a weather.csv folder. The extension is CSV, and then we will try to read. Okay, so we have loaded the data. So if you see, the data is having 11904 rows and it is divided across 31 columns. So now if I want to know what is the info of my data set, there's a function which is .info, which will help you understand कि आपके पूरे डेटा सेट में क्या इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल STA डेट precepts, तो 1094 not null. You have 501 which is into float, so you have a missing value over here, you have missing value over here. So यहाँ पे बहुत सारी जगह पे सिर्फ 00000 है, so that's not null. Okay, we can see over here. Okay, we can see over here that we are having many outliers over here. Okay, so जब आप इसको clean करोगे, you can take under consideration such things from .info, जहाँ से आपको पता चल जाएगा. Okay, and then we try to describe. So basically .describe is a functionality जो सिर्फ numerical, यहाँ पे जितने भी आपके int में होंगे ना वही columns को उठाता है. .describe. Okay, so अगर आपको कोई कुछ बोलता है कभी कि आपके डेटा में कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स है, जस्ट डू data.describe, जितने कॉलम आते हैं गिन के बता दो ये इतने सारे न्यूमेरिकल है, क्योंकि दिस describe will never take any categorical और string data और object data. int float सब उठा लेगा वो. Okay, so this is kind of a tricky thing which people usually ask, तो उनको directly आप यहाँ से बता सकते हो.
So from here you will get so many. You get count, total, you get min, max, to 25th percentile का data क्या है, 50th percentile का data क्या है, 75th percentile का data क्या है. This you all get over here by this analysis. And then you have max value also. And then over here what we do is we try to be so we have taken minimum temperature and maximum temperature for doing our analysis. So basically we're trying to pick one variable, okay, and then एक को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, and based on that these two variables we try to decide कि कौन सा independent होगा, कौन सा dependent होगा, and उसके हिसाब से हम मॉडल को ट्रेन करके हम एरर देखेंगे. ओके, बिलो इज अ 2D ग्राफ बिटवीन मिन टेम्परेचर एंड मैक्स टेम्परेचर. तो बेसिकली मैंने डेटा सेट में से डॉट प्लॉट लिया है बिकॉज आई वांट टू प्लॉट इट. एक्स में डाल दिया मिन टेम्परेचर, वाई में डाल दिया मैक्स टेम्परेचर, एंड उसको स्टाइल दिया है 0. दैट मीन्स इट विल मेक अ 0 ओवर हियर. ओके, देन आई एम पुटिंग plt dot title, जहां पे मैंने टाइटल दे दिया है वर्सेस मिन टेम्परेचर वर्सेस मैक्स टेम्परेचर. आई हैव plt dot x label which shows minimum temperature. Y label पे मैंने max temperature दे दिया, and then I'm doing plot dot show. So plt dot show is show the plot. I'll run this. So I get distribution. So if you see, some outliers are over here, some outliers are over here, and all the distribution is intact nearby. Okay, so okay, good to go. Let's take it ahead. ओके, सो यहाँ पे हम लोग उसको डिस्टेंस टाइट लेआउट पे डिस्टेंस प्लॉट देखेंगे, जहाँ के हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा डेटा स्क्यूड है कि नहीं. So we take plt dot figure giving a size of say 15 by 10, or you can give 10 by 10. We will do tight layout so that it should not get distorted. यहाँ पे क्या किया मैंने, seaborn instance which is sns. okay, sns dot distance plot. okay, यहाँ पे डिस्टेंस प्लॉट अभी हमने थोड़ा टाइम पहले किया था, KDE इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो ये जो लाइन बन रही है वो नहीं बनेगी. ओके, बट यहाँ पे हमने डिविएशन देखना है, तो बेस्ड ऑन दैट आई विल नॉट पुट KDE. ओके, बाय डिफॉल्ट KDE ट्रू रहता है यहाँ पे. तो कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट से अगेन by seeing this plot I can say this is not normal, this is not distributed normally. normal distribution नहीं है, थोड़ा सा skewed है, not totally but थोड़ा सा skewed है. okay, still let's take it inside. तो हम क्या कर रहे हैं, x बना रहे हैं और y बना रहे हैं. so I'm training a single like a simple linear regression with one model, and उसका जो टारगेट है वो उसको मैंने मैक्स टेम्परेचर दिया है. ओके, सो आई हैव x जिसमें मेरा मिनिमम टेम्परेचर है. ओके, ओके, मिनिमम टेम्परेचर. ओके, एंड आई एम रीशेपिंग इट फ्रॉम -1 to 1. ओके, बिकॉज यहाँ पे मेरा माइनस में आ रहा है. ओके, थिंग्स आर कमिंग इन माइनस, तो मैंने -1 से लेके 1 के बीच में उसको स्प्लिट कर दिया है, रीशेप. एंड देन आई हैव टेकन अगेन, वी आर टेकन अ डेटा सेट जहाँ पे मैंने टारगेट में y में मैक्स टेम्परेचर डाला है. लेट्स रन दिस, and I'm reshaping it in from -1 to 1. So again, the x value for me looks like this, y value for me looks like this. So this is a list of arrays. Okay, and then I'm trying to split my data. So now you're trying to actually split data. So let's try and understand this code. I'm keeping x train and x test. Okay, then I have y train and y test. तो ये क्या करेगा, x and y के डेटा को दो सब पार्ट्स में डिवाइड करेगा. वो कैसे करेगा, इट विल टेक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. ओके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो कि मैंने ऊपर भी लोड किया है. व्हेन इफ यू सी ओवर हियर वी आर इंपोर्टिंग sklearn फ्रॉम sklearn model अंडरस्कोर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. तो ये फंक्शन को ही मैं यूज करूंगा टू स्प्लिट इट ओवर हियर. ओके, सो यहाँ पे मेरा train अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, आई एम टेकिंग x and y. ओके, x and y जो ऊपर है, टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2. दिस मींस दैट मुझे जो मेरा x टेस्ट है और y टेस्ट है इसमें 20% डेटा डालना है फ्रॉम दिस. ओके, x एंड y से. x से मुझे 20% लेना है, x टेस्ट में डालना है, y से 20% डेटा लेके रैंडमली y टेस्ट में डालना है. और दिस रैंडम स्टेट इज 0, मतलब अगर मैं रैंडम स्टेट 1 डालूंगा, ओके 1, ओके, तो ये क्या करेगा, पहला उठाएगा, फिर एक छोड़ के तीसरा उठाएगा, फिर फोर्थ छोड़ के पांचवा उठाएगा. तो ऐसे वो 20% डेटा को उठाएगा अंदर रैंडम स्टेट. ओके, नाउ आई ट्राई टू स्प्लिट दिस. सो इफ यू सी आई विल शो यू अगेन. ओके, मैं एक और आई विल शो यू हाउ दिस इज वर्किंग. सो अब मैंने जब रैंडम स्टेट 0 डाला है, यू सी एक्स ट्रेन में क्या वैल्यू आ रहा है, 22 17 -19. ओके, एक्स टेस्ट में क्या आ रहा है, 25 21 17. ओके, दिस इज ओवर हियर. सेम वाई टेस्ट. अब मैं रैंडम स्टेट, चलो मैं उसको बोलता हूँ कि 10 के हिसाब से 10 10 के रैंडम स्टेट में उठाओ. नाउ यू सी योर
योर एक्स ट्रेन चेंजेस 24, 16, 18 और एक्स टेस्ट में क्या है आपके 22, 26, 24. तो ये 10 के गैप्स में रैंडमली स्टेट में उठा रहा है वो. सो हियर आल्सो यू कैन वर्क ऑन योर पैरामीटरिंग. आपको जिस हिसाब से डेटा लेना है उस हिसाब से आप डेटा ले सकते हो. बट बेसिकली आई टेक रैंडम स्टेट 0 ओनली. यस सर रैंडम स्टेट एंड रैंडम सीड का डिफरेंस क्या है सर मेन? रैंडम सीड एज इन वो ना इंडेक्स लेवल पे उठाएगा सीड में. ओके और रैंडम स्टेट में वो काउंट लेवल पे उठाएगा. बट आई विल टेल यू ऑनेस्टली 0 रखो ज्यादा अच्छा है. बिकॉज यू नो कैसा होता है ना कि दिस इज एवरीबडी से कि मतलब मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है लोग रैंडम सेट 42 डालते हैं. तो इसमें सर यस like 42 बहुत common. Every trainer I see is copying the same, but he doesn't knows why you're putting 42. My question is why you want to put 42. तो अब क्या होगा कि वो क्या करेगा ना, वो घूम के ना कुछ सीख नहीं रहा है. 42 फिर जाएगा नेक्स्ट 42 फिर नेक्स्ट 42 नेक्स्ट. मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल डेटा ही 300 है और मैंने 42 डाल दिया तो वहां पे तो मेरा मॉडल खराब हो जाएगा ना. क्यों? क्योंकि वो 42 उठाएगा उसके बाद 42 पे जाएगा फिर 42 डेटा ही खत्म हो गया. राइट वो रैंडमली उठा रहा है. व्हेन यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इफ यू हैव से करोड्स एंड बिलियंस में डेटा है आपके पास, तब आप रैंडम स्टेट 42 डालो ना. तब दैट मेक्स सेंस कि आपका मॉडल जो सैंपल पिक कर रहा है फॉर 80% एंड 20% यू हैव बल्की अमाउंट ऑफ इमेज, वो रिकंसिडर करेगा उस चीज को. ओके सो ओनली चेंज रैंडम स्टेट एंड रैंडम स्टेट पे तभी काम करो. बेसिकली रैंडम स्टेट पे काम करो. मैं तो यही बोलूंगा. डोंट टेक एनीथिंग, पहले 0 ही रखो. लेट द मॉडल टेक इट स्टेप वाइज एंड अंडरस्टैंड. बिकॉज उसमें क्या होता है आप शायद कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड मिस कर दो. ओके यू अंडरस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंट ट्रेंड मिस कर दोगे तो क्या होता है इट रिजल्ट्स इन अंडर फिटिंग. एंड इफ यू आर ट्रेनिंग इट ऑन मल्टीपल और वन साइडेड वो ओवरफिट हो सकता है. and underfitting and overfitting are the two aspects which destroys the model very badly. आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा आपका मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है, इट इज रनिंग वेरी ऑसम, बट वो एक्चुअली में ओवरफिट होगा या फिर वो अंडरफिट होगा. तो इसके लिए रैंडम स्टेट बेस मॉडल जब बनाते हो तो 0 ही रखो, 0 से चेंज मत करो. Got it guys? yes sir. Okay perfect. So now again I'll train. So I've put in my random state 0, so it will take another over here another. Okay I'm trying to train the algorithm, so I'm taking model का नाम मैंने बनाया है regressor. Okay I've taken model name as regressor. Regressor is equal to linear regression. I'm trying to pull the function. Okay अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं that you can put. Okay यहाँ पे भी आप linear regression जब डालोगे, okay so you'll get many things that you can put, but again keep it short and simple. Okay normal linear regression because you're making a base model. Ab one thing that you should keep note. Okay हमने क्या क्या चीज बनाया है, we have made, okay we have made let me put over here. Okay ठीक है यहीं पे ले लेते हैं. Okay please pay attention everybody. Okay हमने क्या किया है, हमने x underscore train लिया है. Okay and we have taken x underscore test लिया है. Okay and then we have also taken y underscore train और y underscore test. Okay अब क्या क्या चीज किधर जाना चाहिए वो ध्यान में देख लो, एक बार अच्छे से समझ लो. ओके जो आपका x train और x train है. ओके सो बेसिकली मॉडल को रन किस पे करेंगे हम. ओके model gets trained. Okay model gets trained on x train comma y train because हम सारा ट्रेनिंग डेटा अंदर डाल देते हैं. okay training data goes as an input. okay so always keep in mind model gets trained on x train and y train जो कि यूज करता है fit method. okay okay फिर बचा क्या, अब दो चीज तो चला गया, मेरे पास बचा है पहला x टेस्ट. ओके एंड आई हैव y टेस्ट. ओके अब जो मेरा मॉडल बना है, मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए मैं प्रिडिक्ट करूंगा. आई विल ट्राई टू प्रिडिक्ट. ओके मैं ट्राई टू प्रिडिक्ट कि मेरा जो प्रिडिक्ट हो रहा है वो
प्रेडिक्ट किससे इवेल्युएट होगा? प्रेडिक्ट गेट्स इवेल्युएटेड, ओके, इवेल्युएटेड, ओके, बाय यूजिंग एक्स टेस्ट दैट द मॉडल हैज नॉट सीन, ओके, एक्स टेस्ट। और मुझे अगर एक्यूरेसी या फिर मेरे मॉडल को फाइनलाइज करना है टू चेक लाइक कि जो मेरा टेस्टिंग डेटा है, जो मेरा प्रिडिक्टेड है, जो कि मेरा प्रिडिक्ट में एक्स टेस्ट गया है, टू प्रिडिक्ट योर एक्स टेस्ट, ओके। प्रिडिक्ट जो है, जो प्रिडिक्ट मतलब इसको बोलते हैं, प्रिडिक्ट को बोलते हैं हम वाई प्रेड, ओके, दैट इज टेस्टिंग योर वाई प्रिडिक्ट, ओके। वाई प्रिडिक्ट को टेस्ट करने के लिए हम लोग वाई टेस्ट यूज करते हैं, जस्ट टू वैलिडेट ऑन एक्यूरेसी फ्रंट वी यूज वाई टेस्ट, जिसमें आपका वाई प्रेड भी जाता है, ओके। और वाई प्रेड में क्या है? एक्स टेस्ट। सो बेसिकली इंट्यूटिवली ये देखो कि मॉडल बिल्डिंग के लिए एक्स टेस्ट और एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जाता है, और चेकिंग के लिए एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, लेकिन दो अलग अलग लेवल पे जाता है। एक जाता है वाई प्रिडिक्शन के लिए, जो प्रिडिक्शन करता है ऑन अनसीन डेटा, और दूसरा एक्यूरेसी लेवल पे हमको बताता है कि ये राइट एक्यूरेसी है, शुड दिस मॉडल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन और नॉट, या फिर उसको फिट करने के लिए यूज होता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, क्या वो प्रिडिक्ट कर रहा है फ्रॉम एक्चुअल टू, बोलते हैं ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू, उसके बीच में नोटेशन करने के लिए, ओके। तो दिस इज हाउ योर थिंग्स वर्क। समझ में आया सबको? एनी डाउट्स? नो सर। समझा? ट्रेन में क्या जाता है, टेस्ट में क्या जाता है, कहाँ पे किसको यूज करना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू नो, आई हैव सीन पीपल, व्हेन आई आस्क, वो लोग बोलते सर हमने मॉडल बनाया, लाइक ओके ठीक है आपने मॉडल बनाया, एंड दे आर फ्रॉम रियली गुड कॉलेजेस, ओके, आई मीन दे आर रियली एक्सपर्ट, बट यहाँ पे वो लोग मार खा जाते हैं, दे डोंट नो कि क्या डालना है, बिकॉज बुक है, बुक में देखा है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डालो, फिट मारो, जरूरत ही नहीं, समझ में ही नहीं, लाइक लॉजिकली यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट गोज वेयर एंड व्हाई यू आर यूजिंग दैट, ओके। सो दिस इज हाउ योर स्ट्रक्चर फ्लोज। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया है, सो आई एम टेकिंग रिग्रेसर, ओके, रिग्रेसर डॉट फिट, wherein you're putting x train, you're putting y train, okay, let's run that, okay. So basically copy underscore x is true, fit intercept true, मतलब fit हो गया है, any jobs that it has run none, and normalize किया है data को, which is false, okay. So we haven't normalized the data, so यहाँ पे false है, okay. And then what we do is we try to retrieve the intercept. तो basically इनका आप देखोगे कि आप इनके values क्या है, तो intercept और coefficients, this is required to make the diagram, okay. So flow diagram होता है, वो बनाने के लिए use होता है. So intercept and coefficients क्या value है, let's see, check. So you can get it from regressor dot underscore dot intercept with this sign, okay. अंडरस्कोर, ओके, एंड देन कोएफिशिएंट अंडरस्कोर से आपको मिल जाएगा, ओके. तो दिस इज द वैल्यू. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टेस्ट इट, like we try to test the prediction. So ypred is equal to regressor, which is our model, regressor dot predict. We are trying to predict on our model and we are giving x underscore test, okay. So इसको मैं रन कर रहा हूँ, it will get run, okay, successfully हो गया है, tries to, and let's, अभी हम लोग इसको डायरेक्टली देखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू फ्लैटन, ओके. अब मैं दिखाता हूँ, कल मैंने आपको बताया था डॉट फ्लैट करते हैं, ओके, दैट विल, देखो y, ओके, y अंडरस्कोर, ना गलत कोड लेना है मुझे, या सो y अंडरस्कोर प्रेड, इट इज हैविंग लाइक दिस, ओके. अब इसको मुझे बकायदा डेटा फ्रेम बनाना है अगर, तो कैसे बनाएंगे, ओके. सो लेट्स ट्राई टू टेक फ्रॉम हियर, ओके. मैं क्या डाल रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या गया है, एक्स टेस्ट गया है, एंड आई एम ट्राइंग टू पेस्ट द एक्यूरेसी बेस्ड ऑन द वाइट टेस्ट, ओके, जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है. देखो स्टार्टिंग में आपने क्या डाला, आपने दे दिया उसको एक्स ट्रेन, आपने उसको दे दिया वाई ट्रेन, ओके. फिर उसके बाद उसको आपने एक्स टेस्ट दिया, एक्स टेस्ट पे उसने प्रिडिक्ट कर लिया, उसको प्रिडिक्ट करके उसको वैल्यूज जनरेट हो गए यहाँ पे, ओके. नाउ बेस्ड ऑन दैट आई एम शोइंग हिम सम अनसीन डेटा, और ypred, ओके, ypred डॉट फ्लैटन करेंगे, दैट मींस ये जो है ये लर्न कर रहा है रिग्रेसर से,
ypred is learning from regressor, that is nothing but my model name. Okay, model name. तो मॉडल यहाँ पे आ जाएगा ypred में. ypred मेरा मॉडल यूज करके मेरे अनसीन डेटा पे प्रिडिक्शन करना शुरू करेगा. ओके, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल दिखा रहा हूँ. ओके, एक्चुअल में मैं ले रहा हूँ y टेस्ट. तो बेस्ड ऑन y टेस्ट डॉट फ्लैटन, जो कि ये लिस्ट बनाएगा. ओके, उसको मैं दे रहा हूँ प्रिडिक्टेड ypred डॉट फ्लैटन. ओके, तो बेसिकली वो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंस दिखाएगा. सो लेट्स ट्रेन दिस एंड इट इज शोइंग मी टॉप 20. तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो एक्चुअल वैल्यू क्या आया है ऑन से 23788. ये मेरा 101090 इसमें से ये इधर लिया है इसने. 88 पे क्या लिया है, एक्चुअल डेटा 19 है, मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है 22, विच इज ओके, नियर बाय. फिर सेकंड 15 है, एक्चुअल 19. ओके, 4 का एनालिसिस है. यहाँ पे 33 और 25 ये सबसे ज्यादा गैप है. बट इफ यू सी नाउ यार 27 और 26 ये नजदीक है. 31 30 ये भी नजदीक है. 31 31 एग्जैक्ट है. 29 31 थोड़ा सा स्लाइड डिविएशन है. 29 33. सो माय मॉडल आई कैन से इज रनिंग ऑन ऑलमोस्ट, अगर आप डिविएट करके इसको विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में अगर डालोगे, सो लेट्स टेक df1 50 ले रहा हूं मैं हेड. ओके, df1 डॉट ओके बार ग्राफ डाल रहा हूँ. ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट, जो यहाँ पे मैंने df1 बनाया है df. ओके, तो df1 में मैं df डॉट हेड ले रहा हूँ. ओके, df1 में मैं df को बुला रहा हूँ, उसमें मैं df डॉट मतलब उसके खाली 50 वैल्यूज मैंने उठाए हैं. सो इफ यू सी df1 जो रहेगा, df1 विल बी ओनली 50 वैल्यूज. ओके, दैट इज बीन टेकन फर्स्ट 50 वैल्यूज फ्रॉम दिस df. यहाँ से 50 वैल्यूज उठाया मैंने जस्ट टू शो विजुअलाइजेशन. ओके, df dot plot kind which is bar. okay, figure should be 16 by 10. okay, या फिर 10 by 10 कुछ भी दे सकते हो आप. plt which is grid which should show major. line width है and line style line width would be in lines. okay, so ये जो lines है lines में होना चाहिए width 0.5, color green. तो ये lines के जो color है वो green होंगे पीछे के, so that ये deviate हो जाए. एंड देन व्हेन यू आर मेकिंग माइनर ग्रिड में आपका ये ब्लैक रहेगा, जो बाहर का लाइनिंग्स है वो इंटैक्ट होना चाहिए. एंड वी आर डूइंग डॉट शो. सो लेट्स ट्राई टू शो फ्रॉम विजुअलाइजेशन. तो अगर आप देखोगे पहले में जो हमारा एक्चुअल है वो ब्लू में है और प्रिडिक्टेड है वो ऑरेंज में है. सो अगर देखोगे तो ज्यादा कहीं डिफरेंस नहीं. देयर इज ओनली वन विच इज शोइंग मैक्सिमम, जहां पे एक्चुअल है और उसने गलत प्रेडिक्ट किया है, और यहाँ पे भी सेम नेचर है जहां पे एग्जैक्टली उसने ज्यादा प्रेडिक्ट किया. तो ये लार्ज नंबर्स के हैं, बाकी सब देखोगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है एंड इट इज नियर बाय. So by this we can say that we can plot a regression line which will be near. जैसे for example ये इधर है तो इसका पॉइंट इधर है, तो इसमें इतना एरर है. So let's try to run plt.scatter x test दे रहा हूँ. अब देखो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, मैं सिर्फ टेस्टिंग डेटा दे रहा हूँ. ओके, और प्लॉट किस पे करेगा, वो प्रेडिक्शन, मॉडल के प्रेडिक्शन पे. तो plt.scatter जब मैं दे रहा हूँ विच इज इन ग्रे, दैट इज ऑल द टेस्ट डेटा. ओके, ये टेस्ट डेटा है, ग्रे में जो है वो टेस्ट डेटा है. लेट मी शो दिस. लाइक सी इफ आई अनकमेंट, ये टेस्ट डेटा है. ओके, अब मैं उसमें क्या दिया, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, कलर ग्रे. तो ये सारा टेस्ट डेटा है. इफ यू सी दिस डेटा एंड यू सी द डेटा दैट यू हैव प्लॉटेड ओवर हियर, ये लुक्स लाइक सेम राइट. ये और देख लो, ये पहले देख लो आप, सेम है क्योंकि हमने 80-50, देखो यहाँ पे भी ऐसा थोड़ा डेटा है, यहाँ पे भी है. द डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स सेम ओवर हियर. सी, so this is just 20% of that. okay, वो पूरा 100% का ये 20% showing same, पूरा nature same है, just थोड़े points इधर उधर है. okay, now what I'm doing is I'm trying to plot a line, regression line, okay, which we say also known as best fit line. okay, for regression analysis I am giving x test already और बाद में मैं y pred दे रहा हूँ इसको, y predict. why? because I'm trying to predict. अब मैंने predict कहाँ किया था, यहाँ पे ypred में मैं क्या दे रहा हूँ, मॉडल, and I'm predicting on x test. okay, so this goes over here for making the model. okay, और color उसका red दूंगा, line width 2, so that it can be visible. let's learn it. It will draw a line. so here I'm getting my best fit line that you can see कि वो हर एक point से गुजर रहा है. okay, with minimum or maximum error. so based on my data I can say that this model is fitting the line properly on the data, and to validate this we'll print the scores over here, error matrix scores.
तो mean absolute error is matrix dot mean underscore absolute error. With this comes under the scikit-learn dot matrix. ये जो matrix है ना, मैंने ऊपर अपलोड किया, देखिए matrix, import matrix, ये sklearn import matrix, इसके अंदर आपका आ जाएगा. सो ये क्या करेंगे हम, matrix dot mean absolute error, जिसमें मैं वापस से ध्यान दीजिए मैं क्या भेज रहा हूँ. आई एम टेलिंग हिम the y test which is unseen and y pred which is the model. So unseen data and model, unseen data and model, unseen data and model, this will only go inside. And then we have mean square error, we have root mean square error, उसको हम लोग mean square error करेंगे और यहाँ पे np dot square कर देंगे sqrt which is square of metric. ये पूरा mean square error को यहाँ पे हमने डाल दिया है पूरा यहाँ पे इसके अंदर. And that will take y test which is unseen and my model that has been predicted. Let's run and try to understand क्या दे रहा है. So if you see 3 17, but अगर आप 16 का 16 मतलब 4 का square root क्या होता है 16. So if you say 14 point something something, that means this is intact. आपका valuation बहुत कम है RMSE में. So this model you can say that it based on this analysis the model is showing good accuracy and you can consider this. But again this is only on this set of data that I'm telling. अगर आपका data set बढ़ेगा तो शायद ये values change होंगे. Okay, and अगर database कम भी हो जाएगा तो भी ये values change होंगे. So based on the present number of data points this result has been shown. All okay guys, any doubts? So we tried to show the difference, क्या predicted है, कितना दिख रहा है, कैसा analysis है, actual data क्या है, model ने क्या predict करके valuation किया है, that all we have printed. Okay, any doubts? समझ में आया आप लोगों को? Linear regression one line of code है, लेकिन you should know what you're using where. Yes, sir. What about others? Understood, sir. Yes, sir. Okay, perfect. Okay, so the next thing is I'll take logistic regression. That also I have brought a solution based. Okay, so that will be the last thing which I'll take for today and we'll wind up the workshop. Okay, but ये मैं use case level पे ले रहा हूँ. So I have a PIMA India data set which is a diabetic data set. Has anybody worked on it before? Narayan, PIMA India data set पे काम किया है? नहीं किया है? What about others? डेटा सेट देखा है बट सर मैंने. हाँ, data set देखा. तो we will try to do detail analysis. The last part for today, I just want your more 20 minutes because I have tried to make it more interesting. Okay, so let me try to like वो मैंने खुद ने solve किया है end to end. So let me bring up that to the board. Till then you can take 2 minutes or 5 minutes of break. Let me arrange that because वो मेरा खुद का work है. Okay, so I'll try to show that. Okay, till then if you want take 5 minutes break and I'll also I'll arrange till then. Okay, Sandhya ma'am, give me permission to arrange the things. Till then you can take break. Sure, sir.
Hi guys. Should we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. Yes, sir. Showing my screen. Just let me know once you can see my screen. Yes, sir, it's visible. Okay. So since the we got to know like someone said about ROC curve, so logistic regression को हम ROC curve से finalize करेंगे. We'll see all the things. Okay. So when he just said that, that clicked in my mind. So that's the reason I arranged. So we will be working on a logistic regression problem. The last use case for today, which is PIMA India dataset, wherein we try to understand from a diabetic perspective how our total outcome works. Okay. So let's take it out, and we'll try to make try to understand the ROC curve and see that what our model predicts. Okay. So we have this. We'll just load the data set. So let's take it up. Okay. So we have so we have diabetic data set. Okay. So we will take this copy path. We'll put it over here. Yeah. Cool. All set. Let's begin the fire and launch for today. So logistic regression wherein we try to import pandas as PD. Okay. अब यहाँ पे क्या है हमारा जो ये diabetes.csv इसमें already columns के नाम present है, but in case if you don't have column names, how you can do is यहाँ पे आप क्या करोगे ना, ये column names by default दे दोगे. Okay. If you see glucose, BP, which is blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, like this. Okay. तो ये आप by default दे दोगे और यहाँ पे है ना खाली एक extension आपको और डालना है यहाँ पे आने के बाद. Okay. So यहाँ पे आप जब डालोगे तो column names आपको डालना है. Okay. That's all. But since we have this already intact over here inside our data set, so what we'll do is we'll try to import pandas, and also let's import numpy if we use anywhere. Let's keep this Karan Arjun together forever. Okay. As NP, no bhedbhav with them. Okay. We are taking PIMA, we are doing pd.read underscore csv, and we take content underscore diabetes.csv that is loaded in our data hub. Okay. Let's run this. Successfully run. We'll do pima.head. We can see that what overall analysis we have over here. Okay. So based on that we have run, we can see that there is pregnancy, glucose, blood pressure, thickness, age, and outcome. So now outcome यहाँ पे है तो हमारा outcome is zeros and ones. So if you want to check like that, okay, so you can say pima dot out. Okay, sorry, it's in capital. Outcome dot value counts. So आपको okay, value counts with this. Yeah. So see, you'll get to know zeros है total 500 का times occur हो रहा है, 1 occur हो रहा है 268 times. Okay. So this is how you can understand. तो ये आपका target variable रहेगा क्योंकि last में क्या है, टारगेट वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सारे. क्यों? बिकॉज combining all this independent variable you can come to a dependent variable that gives 1 or 0. Okay, so this is how it is. Let's try to understand from describe. Let us describe the data set properly. So let's describe. Okay, describe. So if you can see, all the details have been given over here. We have outcome also, which is 768 or pura 768 hai intact. We don't have any missing values. That's the best part. And you can see highest maximum है 1 और ये 0 है और बाकी सब में आपको irregularities देते हैं. Okay, and then you are trying to split the data set with the go. Once you see that you don't have any missing values, you don't need any rework. तो feature columns मैं एक बना रहा हूँ feature column जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ सेट्स दे रहा हूँ, लाइक प्रेगनेंसी दे रहा हूँ, इंसुलिन दे रहा हूँ,
BMI दे रहा हूँ, एज दे रहा हूँ, ग्लूकोज दे रहा हूँ, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज. ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव फ्यू में जैसे हम ना स्किन थिकनेस ये नहीं दे रहे. स्किन थिकनेस आई एम नॉट टेकिंग. सो नाउ I go back to how this happens in a data science life cycle. I go back to the domain expert and try to understand कि ये जो डेटा दिया है इसमें से कौन सा मेरे मॉडल में जाने लायक सही है. So he will give me, the subject matter expert will give me pregnancy, glucose, blood pressure. जैसे प्रेगनेंसी डाल दो, इंसुलिन का ले लो, BMI ले लो, एज ले लो, ग्लूकोज ले लो, ब्लड प्रेशर. जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कंसल्ट करता है तो वो सेट ऑफ रिपोर्ट्स को लेता है, बेस्ड ऑन दैट सेट ऑफ रिपोर्ट्स कुछ पैरामीटर्स पे टेस्ट करके फिर आपको दवाइयां देता है. तो सेम केस में यहाँ पे भी होता है. मॉडल में मैं डालूंगा ये सारे. यस सर, कोरिलेशन भी तो यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे. हाँ, कोरिलेशन आप कब यूज करोगे? जब आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होगा. ओके सर. बट सी रियलिटी क्या होता है ना, रियलिटी में ये तो बस समझो छोटा सा डेटा सेट है. ओके, रियलिटी डेटा सेट में क्या होता है ना, यू हैव n मिलियन ऑफ लाइक इतने सारे डेटा होते हैं कि यू नीड अ एक्सपर्ट ओवर देयर. वहां पे आप कोरिलेशन कब करोगे? एट लास्ट, व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग. आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने भी आपको कुछ नहीं दिया है. ओके, बट ये केस स्पेसिफिक टू दिस केस, इफ यू वांट, डॉक्टर कैन गिव यू क्लियर कट आइडिया कि ये पैरामीटर्स से आप एक डायबिटीज को पकड़ सकते हो. इसका ब्लड प्रेशर देख लो, थिकनेस देख लो, या क्या देखना है वो सारा देख के आप यू कैन अंडरस्टैंड कि या तो ग्लूकोज ब्लड प्रेशर देख लो. अगेन आई एम टेलिंग, इतने ही नहीं लेने हैं. यू कैन टेक इवन वन ऑल्सो, यू कैन टेक इंसुलिन ऑल्सो. बेस्ड ऑन वन ऑल्सो यू कैन डू. देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन, प्रेगनेंसी, BMI, वो उससे भी आप कर सकते हो. लेकिन it depends, it all depends on you, how many much. Why we take more numbers? Because we work on accuracy, we want a good accuracy. तो जितना ज्यादा हमारा डेटा लर्न करेगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेस्ट है. So we run behind accuracy, and again as someone mentioned now, it was Narayan I guess. Okay, so कोरिलेशन से भी आप टेस्ट कर सकते हो. you'll get to know नेगेटिवली है कोरिलेटेड है, पॉजिटिव कोरिलेटेड है. बेस्ट वे इज इफ यू वांट यू कैन प्लॉट अ हीट मैप आल्सो with the same. Okay, so यहाँ पे आप x ले रहे हो, x में आप क्या करोगे? फीचर्स डाल दोगे सारे, which is call underscore features. y में आप क्या करोगे? आउटकम डाल दोगे, which is your target variable. Let's run this. Okay, तो यहाँ पे आपने डाल दिया है, and then we try to split. So यहाँ पे from sklearn.model underscore selection we import test train test split, जहाँ पे मैं x train, y test, y train सबको डाल के ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट में XY टेस्ट साइज मैंने दिया है 0.27. दैट मींस आई एम गिविंग ट्रेनिंग में 75%. ओके, ट्रेन में मैं 75% दे रहा हूँ, और टेस्ट के लिए मैंने रखा है 25% डेटा. ओके, सो दिस मींस टेस्ट साइज 25 दे दिया तो 75% ट्रेनिंग में जाएगा. लेट्स रन. ओके, बेस्ड इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ क्या मैंने कर दिया. ओके, डॉट डन. ओके, so from here, from sklearn.linear model we are trying to import logistic regression. So basically from linear underscore models we'll take logistic regression. Run, initialize हो गया. log rows, logistic regression we are taking as log reg. Okay, that is logistic regression we are trying to impute, and from that we are trying to fit. Again, when we are trying to fit, we are only giving x train and y train. सारा train आप fit में डाल दोगे. That is used for model building. Let's run. Okay, so यहाँ पे आप देखोगे you're getting some values. Class weight none, fit intercept true है, that means the model fitted properly. Okay, and then any penalty that has been given, तो ये L2 penalty already by default लगा चुका है. total time लिया है 0.01, and there was not verbose नहीं था. verbose 0 मतलब जब आप deep learning models में epoch में run करोगे तो आपको verbose दिख जाएंगे. Okay, so that's how your logistic regression works. So all that x train and y train has been running inside. You have the predictive model over here, which is ypred. में आप क्या डालोगे? x test डालोगे. Okay, so prediction के time आप x test डालोगे. Let's run it. Okay, you have your ypred. Now the time is there to use confusion matrix and solve. So आप क्या करोगे? True positives, true negative, false positive, false negative. This is your confusion matrix. Okay,
So let me show you the confusion matrix also, because since you have not taken for first years and second year. Okay, so confusion matrix is this. TP is equal to positive positive, FP is equal to positive negative. Okay, and positive negative is false negative, and true negative is negative and negative, which is true negative. So this is your confusion matrix. Okay, it is calculated using this. तो 50-50 टोटल 60-5-5. तो यही डेटा हम लोग हमारे प्रोग्राम में लेके आएंगे. Okay, so what we do is we try to evaluate using from scalar and import matrix. We have a cnf dot matrix which is confusion matrix. वहां पे हम क्या कॉल करेंगे, matrix dot confusion matrix, which will give you all the this kind of array. Okay, एंड उसमें हम क्या देने वाले हैं, अनसीन डेटा विच इज वाई टेस्ट एंड माई मॉडल वाला डेटा जो मॉडल पे प्रेडिक्ट कर चुका है, विच इज वाई प्रेड, एंड देन विल प्रिंट इट. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. So it's taking 117, 13, 24, 38. So basically what I can say is in the output, out of 177 and 38 are actual predictions and 24 and 30 are incorrect. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पूरा जितना डेटा है उसमें से 117 and 38 are right, are actual predictions. Okay, and 24 and 13 are incorrect predictions. तो आपका ऑटोमेटिकली मॉडल का पूरा एनालिसिस यही पता चल जाएगा कि आपका मॉडल राइट लाइक इट इज टूवर्ड्स राइट classification या wrong classification, because your number that is coming 177, which is देखो 177 or 38 is nothing but this is true positive and this is false positive, sorry, true positive and this is true negative. Yeah, true positive and true negative. Okay, so ये right classify कर रहा है आपका. Okay, false positive and false negative जो आपका है, false positive, false FN and false negative दोनों कम कर रहा है 24 and 13. That means it is incorrect prediction. So your ratio of incorrect prediction is less. That validates that your model is working right and accurate. Okay, then we try to visualize, try to train and visualize the same. तो बेसिकली हमने numpy plot already लिया seaborn as SNS and I'm trying to plot this. तो मैंने क्या किया है, इस सेम चीज को zeros and ones में लिया है because I have to print this over here. तो सेम ये जो चीज है, ये चीज को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है just to make my stakeholder understand. तो again as I said, we will take fig first, उसके बाद axis आएगा, उसके बाद plot आएगा. Okay, and then we have subplot. टेक्स्ट पे मैंने लेंथ ऑफ द क्लास नेम ले लिया which is 0 and 1. Okay, लेंथ ऑफ द क्लासरूम इज 0 and 1 which is 2. PLT टेक्स्ट पे मैं टिक नेम्स और क्लास नेम ले लूंगा. Okay, which is 0 and 1 and टिक नेम टिक मार्क्स which is having length which is 2 2. Okay, तो इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, इसमें 0 and 1 आएगा, इसमें 2 आएगा और इसमें 0 and 1 आएगा. देन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ हीट मैप. ओके, हीट मैप में क्या डेटा फ्रेम में CNF लूंगा which is this, which is having 177, 13, 24 and 38. That I will take it over here, annotate true because I want to show this over here. उसका कलर में C map कर दूंगा which will automatically take the colors, जैसे RBG होगा yellow, green and blue. Okay, it will take that and it will give it will give on the it will flaunt more on the greenish part. Okay, तो green जो है वो exact dark green नहीं होना चाहिए. We put plt.title layout. Based on that, I'm putting title. Okay, matrix, and then we are putting actual label and predicted label, and then we will run it. So जो same fig dot. Okay, I haven't run this. Okay, here we go. Okay, so again the same thing, it is showing perfectly into the visualization. तो मैं अपने stakeholder को ये pattern नहीं दिखाऊंगा. This I will show him this. तो अगर आप देखोगे ये स्केल पे आप देख सकते हो कि राइट 100 के ऊपर है मतलब ब्लूइश है, ये इतने राइट हैं, और यहाँ पे ग्रीनिश है तो मतलब ये यहाँ पे है इतने ऑन द स्केल. सो दिस इज हाउ यू शो योर कंफ्यूजन मैट्रिक्स. एंड देन हाउ डू यू लाइक इन आपके कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इवैल्यूएट कैसे करोगे, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल. ओके, सो आप क्या करोगे, वी विल गो अगेन मैट्रिक्स डॉट एक्यूरेसी, जैसे हमने एरर का किया था लीनियर रिग्रेशन में, सेम ओवर हियर. ओके, वी हैव मैट्रिक्स. ओके, डॉट एक्यूरेसी स्कोर, वहां पे हमें क्या डाल रहा हूँ, वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड. ओके,
हमेशा इवैल्यूएशन में वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड रहेगा। वाई प्रेड के अंदर क्या रहता है, मॉडल रहेगा जो लर्न हुआ है एंड एक्स टेस्ट रहेगा। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल हैव प्रिसीशन एंड रिकॉल, जिसमें कुछ नहीं है। एक्यूरेसी स्कोर जैसा बुलाया है, मैट्रिक्स डॉट प्रिसीशन स्कोर बुलाओ, मैट्रिक्स डॉट रिकॉल स्कोर बुलाओ, एंड देन वी विल रन इट। We get an accuracy of say 80% over here only, and if you see there is precision which is 74, which is quite near. तो accuracy तो accurate दिखा रहा है, कितने accurate हुए। precision is also showing that is precise, that is right। precise कितना उसने correct किया है, which is 74, again a good score। so based on this we can say that हमारा accuracy 80% है, हमारा precision 74% है, the model is running super awesome। okay, we can take it into consideration। okay, so और जो हमारा रिकॉल है वो 61% है। सो इफ योर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज वेरी नाइस, वी डोंट नीड टू गो टू रिकॉल। अगर आपका एक्यूरेसी ठीक नहीं है, प्रिसीजन नहीं है, तो रिकॉल पे जाओ। एंड उसके बाद हम द ब्यूटीफुल कंसेप्ट जो हमारे पूरे मॉडल को वैलिडेट कर देता है, दैट इज आरओसी कर्व। ओके, कि ये राइट है कि नहीं, कितना परसेंट। तो जैसे हमको यहाँ पे दिखा रहा है ये 80% है, यहाँ पे 80%, तो ये यहाँ पे वो फॉल देगा। तो जैसे आपका रिग्रेशन जा रहा है 80% से वो एकदम डिविएट हो गया है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो जाएगा 80% यहाँ तक। तो ये वेरिएशन क्या है, यहाँ से यहाँ है। ओके, 80% का ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% आया, यहाँ पे ये इट इज 2। और उसके बाद वो एक्यूरेसी सीधे 86% पे क्लिक मार रही है। ओके, सो व्हाई डू वी डिड, वी आर डूइंग प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी। ओके, वी आर डूइंग प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी, जहां पे हमने क्या किया था, हमने पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो हमने लर्न किया था, उस पे हम लोग ने लॉग प्रिडिक्ट किया था। देखो, लॉग प्रिडिक्ट। अब यहाँ पे मैं लॉग प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी करने वाला हूँ कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट विल गिव राइट। ओके, उसका स्कोर हम देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जहां पे मैं एक्स टेस्ट को डाल रहा हूँ विथ ऑल कॉलम्स एंड इट विल गो टिल फर्स्ट, खाली एक ही ले रहा हूं मैं, एक। ओके, ऑल द रोज, ओके, ऑल द जो हमारा इनपुट है, ये जो है ना, ऑल द इनपुट्स एंड ओनली वन। ओके, फर्स्ट ये, उसको मैं FPR which is false positive ratio and TPR is true positive ratio। so FPR and TPR लेंगे हम, which is false positive ratio and true positive ratio। उसको हम metric dot ROC underscore curve में हम क्या डाल रहे हैं, again y test which is unseen and y pred that is having my first number one observation, एक data point जो हमारा ले रहा है वो। okay, and then I'm putting AOC which is area under the curve and ROC is receiver operating characteristic which is ROC curve। okay, so area under the curve will tell me कि कितना परसेंट हमारा कवर अप हो रहा है, and that is awesome, like कितना बेस्ट दे रहा है वो। okay, so उसमें कैसे करेंगे हम, मेट्रिक डॉट ROC अंडरस्कोर ROC डॉट अंडरस्कोर AOC अंडरस्कोर स्कोर, जहां पे मैं टेस्ट दे रहा हूं और वाई प्रेड प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं। सो इट इज वाई प्रोबेबिलिटी बिकॉज इट इज टेकिंग वन एलिमेंट और उस एलिमेंट को वैलिडेट करके प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि ये इतना परसेंट दे सकता है। तो एक डेटा पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे यूजिंग फॉल्स पॉजिटिव रेशियो ओवर हियर, ट्रू पॉजिटिव रेशियो ओवर हियर, एंड देन वी विल टेक डेटा वन। ओके, एक डेटा का कितना एक्यूरेसी, मतलब मेरा मॉडल ऑन एन एवरेज सारे डेटा पॉइंट्स पे 80% दे रहा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू दूं मेरे मॉडल को कि भाई ये नया एक डेटा आ रहा है, वन डेटा दैट इज कमिंग, यू वैलिडेट एंड टेल मी वो कितना परसेंट एक्यूरेसी है फॉर जस्ट वन डेटा पॉइंट। ओके, उस पे मैं अपना ROC कर्व डिसाइड करूंगा। Let's run it। So it is showing me 86 on data 1, it is showing 86.228, so almost 87% वो दे रहा है। तो you can say that 86% AOC score for the case is 0.86, which is AOC score of 1 represents perfect classifier। okay, AOC score 1 तक जा रहा है, but ये deviate हुआ 86 पे, तो उसका accuracy 86 है। and 0.5 अगर ये 0.5 में होगा, then that is a worthless classifier। So over here मेरा एक डेटा पॉइंट पे just to cross check and validate my accuracy is 86%, that can be said that the model can be consideration for going in production now because वो 86% right classify कर रहा है on any data point। सर वहां पे हम गेस्टिंग लाइन भी बनाते हैं ना एक सर बीच से। हाँ, वो 50% होता है कि मतलब just a threshold कि इससे ऊपर जाना चाहिए मेरा। यस सर। Yeah, so that is, but again as I said 50.5 भी रहेगा ना, that is a worthless classifier, not never ever go, you again need to go and do some rework on your model। Does that Yes, make sir. sense guys?
Narayan knows this concept, so he's understanding fast. What about others? Understood, sir. Perfect. Yes, sir. Okay. Still, guys, I'm always open. We have this WhatsApp group, so you can post. I was expecting some questions to come up, but and I have shared some resources. आज के resources भी मैं आपको share कर दूंगा. And on this note, thank you so much for listening to me since 9:30, 9:30, 9:40. And thank you for maintaining the decorum so properly. Really appreciate you guys. You all guys are superb. Like, I mean, I have never, ever seen such silent class which kept listening without even pinpointing on one thing. So thanks for giving me that platform wherein I can make the best out of it, and whatever knowledge I possess, I could showcase that. So thank you so much, guys. On this note, I will always say one thing, that in life, wherever you are, there's a time, like this is especially for TY, FY, and undergraduate students, that you may face. Sometimes you feel like you're worthless in life, but trust me, that's the phase you started growing. Because if you're thinking that you're worthless, your progression starts. And if someone who is there who pulls your leg down in life, don't ever fall sick with it. Because trust me, one thing, keep working hard, things will get aligned in your door. Okay. So basically, there's one line which I always use, कि life में आपके अंदर ना आग सब में होती है. Okay. There's a burn of fire inside everyone. People, it's us only, we try to blame others, that इसके वजह से ये हो गया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया. बट रियल रीजन इज दैट वो आग जो हमारे अंदर होती है ना, टू डू बेस्ट, वो हम खुद बुझा देते हैं. ओके, व्हाई? वी ट्राई टू सी एरर्स इन अदर्स, बट वी शुड ट्राई टू सी एरर फर्स्ट इन आवरसेल्व्स, कि मुझसे क्या मिस्टेक हुआ कि ये चीज मुझे नहीं मिली, एंड देन वी ट्राई टू रीवर्क ऑन दैट. rather than spending time on finding others errors, spend time to find your error. एंड वो पता है क्या होता है ना, उसमें रिजल्ट्स क्या होता है, जब एक आग को आप बुझा देते हो ना, वो राख बन जाती है, और बाद में लास्ट में बहुत तकलीफ देती है लाइफ में. ओके, यू रियली गेट डीमोटिवेटेड. सो नेवर एवर गेट डीमोटिवेटेड. अगर आप कुछ कहीं पे सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, you're getting a downfall, trust me, you have something big that is waiting for you. Okay, just go back, rework on your things, stick to your basics. Okay, don't get emphasized if someone comes and says दी मैं तुम्हें 10 दिन में ये सिखा दूंगा, 12 दिन में सिखा दूंगा. This is not wrong. Everything has a small basis, everything has a base point, everything has a learning step. Go step by step, things will be intact, and you will be a long like आप लंबी रेस के घोड़े बनोगे उसमें. Thank you. On this note, I'd like to Sir, Sarvesh has a question. Madhav sir, Sarvesh has a question. yes. Sarvesh, he has put it in the chat. Hello, sir. If sir, I want to become a data analyst, then what is the procedure? Means path for that? Okay, after my degree completion. So you don't need to complete, you no mute. Yeah. So you don't need to wait for your completion of graduation. I would say that you kickstart from today only. Work on NumPy. Like if you select Python for programming, take NumPy seriously, take Pandas seriously. Okay, NumPy and Pandas के documentation online available है. If you just go, उसका जो documentation है, documentation को पढ़ डालो. Okay, and there is one more. I have shared a link yesterday, a doc file in the WhatsApp group. उसमें बहुत सारे links हैं. Okay, of libraries like numpy, pandas. उतने भी आप अच्छे से कर लोगे, उसके एग्जाम्पल्स को लो, बैठ के एग्जीक्यूट करो. जब आपको वो एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, टेक अ रैंडम डेटा सेट, वो डेटा सेट उठा के उस पर प्रोसेसिंग करो, यू विल बी इंटैक्ट. ओके, डोंट रन बिहाइंड फैसिनेटिंग थिंग्स, बिकॉज सी इवन आई कैन शो यू फैसिनेटिंग थिंग्स. 2 मिनट लगेगा मेरे को फैसिनेटिंग थिंग्स दिखाने को, जिसमें आई कैन से that EDA can be done in just one line of code. I can show you that. In one line of code, you can do all the EDA.
ओके सो अभी नारायण को मैं अगर बोलूंगा नारायण एक लाइन 1 लाइन ऑफ कोड में ईडीए हो सकता है क्या? व्हाट नारायण विल से एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इन जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड हो सकता है नारायण? होता भी है सर, बट उतना सा मैंने देखा नहीं है। लाइक मैं तो हाँ सर लाइंस, बहुत लाइंस ऑफ कोड लगता है एक्चुअली अभी मुझे तो। बट आई कैन शो यू इन 1 लाइन ऑफ कोड में 1 लाइन ऑफ कोड में आपको पूरा ईडीए करके दिखा सकता हूँ इन जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड। इट विल मेक फुल प्रोफाइल। आपका कोई भी डेटा दे दो मुझे उसमें सब बता देगा वो 1 लाइन ऑफ कोड में सिर्फ। सो दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज व्हाई आई गॉट टू नो व्हाई, बिकॉज आप कोई भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को पकड़ो हंसेगा आप पे, लेकिन ये एक्चुअली में पॉसिबल है। 1 लाइन ऑफ कोड में आप ईडीए का पूरा मतलब आप पूरे डेटा सेट का प्रोफाइल बना सकते हो 1 लाइन ऑफ कोड में, because there are people in Python community who have put in that efforts to make those libraries. You just need to be very alert and very keen on understanding, and that comes when your basics and your basic skill is strong. So again, data analytics you want to get into, I would tell you numpy pandas matplotlib को आप चार्ट लीजिए अच्छे से, उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, because that is the heart of learning. कोई भी चीज का डॉक्यूमेंटेशन ढूंढो, पहले डॉक्यूमेंटेशन मिल गया, you get everything. Sarvesh, that you Yes, understand that? yes, sir. And Okay. So you don't need to wait to complete your graduation. अभी से चालू कर दो. Just Sir, I just have one doubt. yeah, just a minute. Just keep one thing in your mind, okay, Sarvesh. Imagine if you start from today, आप अगर एग्जाम कभी इंटरव्यू में बैठे हो, just focus and imagine and aim for that day कि आपको data analytics के जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, you should be master enough to give all answers. If you start from today, you can achieve that day very soon. okay, sir. Thank you, sir. Yeah, next question. Sir, in logistic regression, is it possible that dependent variable can contain more than two values? Yeah, it can. मैंने इसमें यही किया है ना, यहाँ पे what I have shown, इसमें तो मैंने multiple features लिए है ना. I just took one data to evaluate my ROC curve so that I can understand कि 80% तो average देता है ना, मतलब सारे data points को पकड़ के 80% दे रहा है, लेकिन एक data point पे कितना परसेंट दे रहा है, that should also I validate ना, कि प्रोडक्शन में भेज दिया, पता लगा मेरा क्लासिफिकेशन हो रहा है, एक कोई आया चश्मा डाल, जैसे एयरफ्लेक्स का एक प्रोडक्ट है, राइट, एयरफ्लेक्स का प्रोडक्ट है, वो आके खड़ा हुआ, ही इज नॉट वेयरिंग स्पेक्स, बट मेरा मॉडल बोल रहा है प्लीज यूज दिस स्पेक्स और प्लीज रिमूव योर स्पेक्स, so that is the wrong classifier. So इसलिए just to identify ROC curve will validate that आपका एक डेटा पॉइंट रैंडमली आपने 1 लिया है, 2 लिया, कितना एक्यूरेसी दिखा रहा है. Okay, sir. Any more questions, guys? Sir, I have a question. Yeah. सर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए हम लोग कौन सा मॉडल प्रेफर कर सकते हैं? लाइक आई हैव यूज हार्ड कास्केड एंड योलो एंड कोको, बट दैट नॉट प्रीटी मच एक्यूरेट. आई वांट समथिंग व्हिच इज like more than 75% accurate. Which you will suggest me? So it depends upon the data that you're using first. First of all, आपका data क्या है उस पर depend करता है. What kind of data your object detection के लिए कौन सा? You're using object data क्या है आपका? Sir, I have collected so many pictures, like hundred of pictures, sorry, thousands of pictures of negative and positive. नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट. तो उसको आपने कुछ मतलब उसको आपने कुछ टैग्स लगाया, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपका मॉडल को कैसे बता रहे हो कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? Sir, I have used hard cascade and in a folder I have put that on. Okay. So आपने कितना thousand what is the accurate number? Sir, 1000 number for positive and 200 for negative. Okay, so how you have done, see I'll tell you, अगर आपको ना you need to increase more number of data, आपको accuracy बढ़ानी है, right? You want good accuracy. Yes, sir. So try to train it with more data जहाँ पे आप negative को भी बढ़ाओ थोड़ा, like you're just putting 200 negative and 1000 positive. Why don't you put, ये imbalanced data set हो गया है. Okay, this is an imbalanced data set. Either you put 1000 positive and 500 negative.
तब वो उसको समझ में आएगा, वो क्लासिफाई करना शुरू करेगा कि ये गलत है बेस्ड ऑन द tag that you are putting of the folder, right? This is negative and positive. So try to increase your data first. एक बार increase करो और don't increase just 1000. Try to scrape more. आप है ना इंटरनेट पे डालो. There is a 3 line of code that I remember Python में, जिसमें आप है ना कोई भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान डाल दो, वो पूरे नेट में सर्च करेगा और आप उसको एक वेरिएबल दे दो कि 5000 फोटोज मेरे को चाहिए. वो विद इन सेकेंड्स 5000 फोटो कहीं ना कहीं से वेब में से डाउनलोड कर लेगा, जिसके पिक में या कहीं पे भी शाहरुख खान लिखा होगा, उठा के आपको लाके वो फोल्डर में सेव करके दे देगा. दैट इज हाउ वी कलेक्ट डेटा इन इंडस्ट्री. ओके सर, थैंक यू. Okay, just search for the code. मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन I want you to do that rework, okay? Because आपकी googling अच्छी हो जाएगी इसमें. Yes sir. Yeah. Any more questions, guys? Okay. So if we don't have any more questions, yeah. Okay. Thank you, ma'am. I'm done from my side. Over to you, Sonatika. All the participants have to fill the feedback form, as the certificate will not be released. Okay, that brings me certificate. How do we? So basically, you will have a certificate. You should make a LinkedIn account and you should go and publish that. Okay, and once you're publishing the e-certificate on your LinkedIn, just make sure that you write something that you're learning from this workshop. Okay, why I'm telling that? Because अगर आप same चीज रखोगे, we have learned something about data analytics, data science, just pick 2 line or say 1 or 2 line of your concern that this workshop actually gave you some analysis कि ये सारी चीजें इसमें ऐसी होती हैं that I was unaware. Okay, and then use hashtags. So try to run. जैसे मैं अपने whatever post I put on LinkedIn, I put hashtag learn with Madhav. Okay, so like that I would suggest that you should also put like SIA data analytics, something like that, or SIA DS workshop. तो वो चीज को आप एक जैसे 10 people will use the same thing. Like for example, let me put it into the chat so that it can help you. Okay, so for example, hashtag SIA in small, okay, DS, okay, workshop. Okay, so this hashtag, if you're putting, everybody should put the same hashtag SIADS workshop. So ये क्या होगा, जब मल्टीपल लेवल्स पे आपके पोस्ट आएंगे, इट विल स्टार्ट मेकिंग क्लस्टर ऑफ इट. ओके, फॉर एग्जांपल आई पोस्ट, संध्या मैम पोस्ट है, सोनालिका पोस्ट, तो ये तीन लिंक्डइन को पता चलेगा कि कुछ ट्रेंड चल रहा है जिसमें सब लोग एक ही हैशटैग यूज कर रहे हैं, and it will start making cluster of it, and that cluster if it becomes more and more big, okay, वो क्या करेगा, वो ट्रेंडिंग पे चढ़ जाएगा, just like Twitter works. Okay, and then ahead about all this, ये workshop related, if you are putting some questions related to Python or your some personal findings that you're learning, go do share it. अगर आपको कुछ अलग सी चीज मिल रही है, जाके उसको डाल दो लिंक्डइन पे. Why? It will show a positive feedback. अगर आपका कोई जैसे any recruiter who is inside that eye कि मुझे कोई एक freelancer मिलना चाहिए या फिर internship के लिए मिलना चाहिए, अगर आप ये सब डालोगे, डाल दो नीचे. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल पाइथन पे लिख रहे हो, तो पाइथन के रिलेटेड जितने भी हैशटैग्स हैं, वो क्वेश्चन के नीचे जस्ट गो एंड पुट learn Python, Python 3, Python questions, Python interview questions, Python recruiter. So automatically क्या होगा ना, जब कोई recruiter आएगा, वो Python को Python के लिए सर्च करेगा, like he wants someone who is good in Python. Automatically आपका पोस्ट उसके ट्रेंड लाइन पे दिखना शुरू हो जाएगा. Then he can directly connect you. He will know that this person is putting post on Python. Hey, let's do one thing. He's a fresher. Let's hire him out. तो आपको automatically recruiters मैसेज करना शुरू कर देंगे. They will send you email on a personal note. So like this, I mean, I'm not telling just put this also, you can make your own hashtag also, okay, and you can just let me also know. I will also help you out. Mere already I have my LinkedIn account, I can show I have 3,000, more than 3,000, like 3,000, 4,000 people connected to me, which are only inside data science and product management.
So that's how beautiful it is. Your post view matters a lot, but not the likes. Just stay in touch. Okay. So keep this practice, okay, of putting post. Start your own trend lines, okay, but ऐसा भी मत करो कि एक कॉलेज है तो एक कॉलेज में 50 लोग 50 ट्रेंड लाइन चालू कर दो. Start one, make a cluster, make it successful, and then start the next. Okay, someone who is good in say JavaScripting, posting your findings, or if you have completed any project, just put it over there and find and tell them, go find my project on GitHub. उसका GitHub का link डाल दो. Simple. Okay, so this is all that I wanted to say about posting. And yes. Yes, sir. I was trying to make an NLP model, sir, and I have to scrape data from like a website that Yeah. is for that movie movie reviews. So how from which library should I do? Like a Beautiful Soup is better Yeah, website. Beautiful Soup is okay, but I'll tell you one thing. You just want reviews, right? Yes, sir. You have n number of data set. Google data set search करो. Google data set पे जाके movie recommendation reviews डाल दो, तुम्हें बहुत सारे data set मिल जाएंगे already. So don't waste time scraping, because But if लेना है तो मुझे data set like a live data feeding चाहिए तो सर उसके लिए. हाँ, तो आप scrape करो. IMDb वेबसाइट है ना, उसको scrape करना शुरू कर दो. Okay, sir. तो उसमें एक टैग होगा, जस्ट गो थ्रू. जब वो पूरा लोड कर देगा ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. गो इंस्पेक्ट करो जाके. गूगल क्रोम में कंट्रोल आई करके इंस्पेक्ट होता है. इंस्पेक्ट करो. इंस्पेक्ट में आपको टैग मिल जाएगा. तो जब वो इंस्पेक्ट करते हो ना आप, तो वो आपके वेब फॉर्म में दिखाता है आप कहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हो. ओके, तो जस्ट क्लिकिंग पकड़ लो, उसका टैग मिल गया, लाके इधर फाइंड ऑल में डाल दो, ऑटोमेटिकली पूरा स्क्रैप कर लेगा वो रिव्यूज. ओके सर. And one more. Sir, yeah. I have one doubt. Sir, मैं एक ऐसा बॉट बना रहा हूँ कि जो YouTube पे जो ये होते हैं वीडियोस, उसके नीचे कमेंट पे वो कंटिन्यूसली कमेंट करते जा रहे हैं. ओके, मतलब मुझे बनाना है, लेकिन सर उसके लिए मैं जो अपना पिक्सल मैचिंग होता है ना, वो मुझे यूज करना है. तो वो कैसे करूँ? मुझे गूगल पे ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहा है. अच्छा. Okay, so you need, your use case is to create a bot, okay, and you want to match pixels. Yes sir, pixel matching. And why you want to match pixel? सर मतलब वो जो कमेंट होता है ना, कमेंट सेक्शन, वहाँ पे जाके वो देखेगा कि मतलब पिक्सल मैच हो रहा है कि नहीं, वो कमेंट सेक्शन के. या फिर लाइक बटन होता है हमारा, तो वो लाइक बटन पे जाके देखेगा कि लाइक बटन और जो मुझे डेटा मिला है वो सेम है क्या, मतलब पिक्सल दोनों सेम है क्या. तो वो उस पर हिट करेगा. उसके लिए मैं PY ऑटो GUI लाइब्रेरी है वो यूज कर रहा हूँ माउस को घुमाने के लिए सर. तो Okay, but honestly telling, you are making this, but this is not legitimate, okay? Honestly, yes, I know that, but for my practice only. Don't speak on public forum like this. पकड़े जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. YouTube तुमको फायर कर सकता है. Okay. So see, you need to do research first based on how the pixel is been read. Okay. तो बेसिकली पिक्सल्स का वैल्यू पता है कितने वैल्यू में रीड करता है, वो रेंज कितना है? नो सर, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस. पिक्सल्स कितने रेंज में होता है? एक कोई पिक्सल होता है 0 to ग्रे स्केल इमेज, RGB कलर्स, HSP होता है. एक there's a subject called कंप्यूटर ग्राफिक्स. उसके बुक्स अगर आपको मिलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा. कंप्यूटर ग्राफिक्स के बुक हैं जिसमें आई गेस 0 to 256 आई गेस 256 शायद है. और फिर स्क्रीन प्लॉटिंग होती है जो चलती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सॉरी सर 255 समथिंग. 255 या मतलब वही 0 to 255 या 256 फ्रॉम 1 या. so on that scale you can analyze first, but मेरे को देखना पड़ेगा because your selective condition is based on like button का पिक्सल and इसका पिक्सल क्या बोलते हैं पिक्सल. Is it? Yes. हाँ, तो तुम दो चीज को ट्रेस कर रहे हो. तो देखो तुम्हारा मॉडल ना
बन सकता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट एक कंडीशन रखो, खाली 2 कंडीशन रखोगे तो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन डेटा होती है। ओके, डेटा गेट स्ट्रीमलाइंड। ओके, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक अगर स्ट्रीमर है, ओके, अगर एक वीडियो बन गई तुम्हारी, दैट इज ओके, वो तो एक पिक्सल क्वालिटी पे होगा। ओके, बट समझो मैं अगर स्ट्रीम कर रहा हूँ, मेरा इंटरनेट स्लो हो गया, तो उसका क्या होगा, वो कौन से बैंडविड्थ पे आ जाएगा, लो बैंडविड्थ पे आ जाएगा, राइट, स्ट्रीमिंग पे। पिक्सेलेट हो गया, वहां पे आप अगर पिक्सेलेट हो गया या डैमेज हो गया, तुम्हारा मॉडल उधर ही मर जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कुछ। तो इसके लिए कंडीशन चेंज करो, बॉट बना रहे हो तो कंडीशन चेंज करो। कैसे कर सकते हो, एक आइडिया दे सकता हूं मैं। कोई भी स्ट्रीम जो चलती है या फिर कोई भी वीडियो आता है, वो हैशटैग यूज करता है उसमें, राइट। तो क्या करो मालूम है, हैशटैग्स को कैप्चर करो और उस पे मॉडल पे डिसाइड करो कि अगर क्या बोलते हैं कि चिल स्ट्रीम है या फिर पबजी स्ट्रीम है, तो ये कमेंट्स आने चाहिए उधर जाके, मेरा बॉट ये कमेंट करना चाहिए। अगर मेरे पास एंटरटेनमेंट टैग आ रहा है तो ये होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली कीवर्ड्स के हिसाब से आप एनएलपी को फिल्टर आउट कर दो और उधर सेट कर दो। और हाँ, दूसरा चीज, अमेजोन लेक्स ट्राई करना एक बार, जस्ट ट्राई टू लर्न अमेजोन लेक्स वंस। सुना है कभी? नहीं सर, नहीं सुना। हाँ, तो बॉट बना रहे हो अगर लाइफ में, तो अमेजोन लेक्स। कोई भी इंटरव्यू वाला बोलेगा तुम्हें कभी भी, तो यू हैव मेड अ बॉट, व्हाट यू हैव यूज्ड, पहले उसके मुंह पे चिपका देना, अमेजोन लेक्स से बनाया सर, मेरे को अमेजोन लेक्स आता है। वो तुमको हायर कर लेगा ऐसे। जस्ट लर्न अमेजोन लेक्स वेरी नाइसली। तो ऐसे अमेजोन में बहुत सारे चीज हैं दूसरे दूसरे दैट यू कैन लर्न। सो आई विल टेल, आई मेड अ बॉट टू ऑर्डर पिज्जा विदाउट इवन टाइपिंग वन थिंग, बस खाली उसको बोल दिया ऑर्डर अ पिज्जा, इट स्टार्टेड टेकिंग द डिलीवरी ऐसा। सो अमेजोन लेक्स इज यूज्ड फॉर दैट, इज रियली सुपर ऑसम, लाइक यू कैन यूज। So all people who are from cloud computing, Amazon use कर रहे हो या host कर रहे हो, if you are hosting website, just check out Amazon Lex over there. It's very nice. Okay sir, thank you. Any questions? No questions? Over to you. What a beautiful Sunday morning it was to begin the day which is celebrated as National Science Day to mark the discovery of the Raman effect by Indian physicist Sir C.V. Raman on 28 February 1928. And here we are on 28 February 2021, understanding visualization in data science with real-world examples, understanding Matplotlib and how it helps for data visualization. Best day to begin the journey towards data analytics and data science. Remember, the end of one chapter is just the beginning of another. The best part is always yet to come. On behalf of the Department of Information Technology and Mathematics UG and PG section, we are grateful to you, sir, for sharing your valuable knowledge and sparing time with us for 2 days from your busy schedule. We hope to keep learning and developing in the future and keep ourselves updated. Looking forward for the phase 2 of this workshop. Now let's have the analysis of 2-day workshop. I kindly request Vaishnavi Tavde from 3rd year BSc IT to read the report for day 1 of the workshop. Over to you, Vaishnavi. Thank you, Sonalika. A warm good afternoon to one and all. I am Vaishnavi Tavde from TY BSc IT. I am glad to have this opportunity to read the report of the day 1 of the workshop, that is of 27th February 2021. So report goes as this. Report on the workshop, Trends in Data Analytics and Data Sciences. Date of the workshop, 27th February 2021. Place of the workshop, Microsoft Teams. Resource person for the workshop, Mr. Madhav Mishra, sir. The session of the workshop on Trends in Data Analytics and Data Sciences was hosted by Sonalika Singh from MSc Part 1. The workshop started with the digital lightning of lamp. Since light is the symbol of brightness and prosperity and brings warmness to all positive vibes which spreads out. The goddess Saraswati is the authority of the academics and arts. Under her guidance and knowledge, our session was started with Saraswati Vandana.
After Saraswati Vandana, our principal, Dr. Padmaja Arvind ma'am, addressed us with the importance of data analytics as a career in the future. Moving further, our head of department, Mrs. Shrikala ma'am, welcomed our resource person, Mr. Madhav Mishra sir, by addressing him. Sonalika Singh gave a brief introduction of our resource person, Mr. Madhav Mishra sir. Madhav sir started the workshop by giving an introduction to data science with some past experiences of his works, achievements, and some practical applications where analytics is applicable. Data science is a huge field that uses a lots of methods, concepts which belongs to other fields like information science, statistics, mathematics, and computer science. To make the workshop more interactive, Madhav sir took question answer sessions which were conducted after end of each topic. Madhav sir moved on to introducing the FY students to some popular digital platforms like LinkedIn and GitHub with their importance too. The basics of Python were covered with the live programming session along with its implementation, where some packages like NumPy, Pandas, Matplotlib were also introduced and were practically performed. The last question answer session was conducted further for better understanding. The session before ending was summarized by Madhav sir. Sonalika addressed sir by thanking him for giving us his precious time and pleasurized knowledge. Thank you so much. Over to you, Sonalika. Thank you, Vaishnavi. It's a humble request to Chaitanya Kulkarni from 3rd year BSc IT to read the report for day 2 of the workshop. Over to you, Chaitanya. Sure, thank you. Is my camera on? Okay, so thank you so much, sir, for such an energetic session. And it was a great session to be said because it is the field that I want to aspire. So here I go with the report. The name of the workshop was Trends in Data Analytics and Data Science, and the date was it's today, that is 28 Feb 2021, and the platform is Teams. The name of our resource person is Mr. Madhav Mishra sir. So the session of workshop Trends in Analytics and Data Science day 2 was hosted by Sonalika Singh from MSc IT Part 1. The workshop started with the host Sonalika Singh welcoming everyone along with our resource person Mr. Madhav sir. With greetings, she recapped the workshop's highlight from yesterday, that is day 1 session. Madhav sir started the day 2 of workshop by discussing and enlightening the necessity of data visualization in data science and how it is useful in making decision-making process. This was followed by a short question answer session in which Madhav sir discussed the scope of data science and role of data science in game development industries. Further, he discussed the tasks that are handled by data scientists by giving some real-life instances. And a notable example he shared was Facebook Cambridge Analytica data scandal. This was followed by another QA session, that is question answer session. The question answer session was bombarding more and more factual things to coming out, and which made workshop more fascinating and simultaneously more interesting. After this interactive question answer sessions started with practical implementation of Matplotlib, which is used for data visualization, which was followed by implementation of model building package in Python, which is scikit-learn. With this motivation and doubt clearing session was a great experience to go from, which made our vision clear for our goals and future. The more students interacted, I am sure they have inculcated positivity for future aspect. Thank you so much. Over to Sonalika. Thank you, Chaitanya. The real gift of gratitude is that the more grateful you are, the more present you become. We, the students of Department of the IT and Mathematics of the S.I.A College, would like to express our deepest gratitude to Madhav Mishra sir, the S.I.A Management Trustee, K.V. Ranganathan sir, for always being there as a strong support, ever supporting Principal Dr. Padmaja Arvind Madam,
our motivator Shrikala Naya Madam, head of the Department of Information Technology and Mathematics. And our sincere thanks to all dear teachers who have been there with us through these 2 days. I kindly request our teachers to express their motivational views about the workshop. I kindly request Sandhya Thakkar ma'am to please share her views regarding the workshop. Over to you, ma'am. Thank you, Sonalika. Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure to see the way we are ending on such a wonderful day, which is celebrated as National Science Day. My deepest thanks goes to K.V. Ranganathan sir, who has always been a motivator, who has always been a great supporter towards taking up anything which is innovative. Taking his vision further, our principal ma'am, who has always been there, as a great support for various activities which we have always conducted in the somebody wants to speak, I think so. Rashmi ma'am, over to you. One second. Yes, Rashmi ma'am, you can speak. I think she's not able to unmute herself. The entire 2 days, which we saw starting from the day 1 till date, the entire credit goes to the dear students who have taken efforts to bring this workshop and making it a grand success. I would like to express my sincere thanks to Sonalika for taking up this particular task of anchoring the entire workshop. Hello, Sandhya ma'am. Yes. After your completion, I'll speak. Okay. Yeah, sure, ma'am. Absolutely. If you would like to continue, I can stop and I can speak later. Yes. Hello, Madhav sir. Hello, ma'am. I know you before also. We were in the same college for our post graduation. So Yeah. it was 2 days. It is very good session so that IT students can think about something different as a career, their career choice, that is data analytics part. Because every time na IT is like, हम लोगों को coding करना है, we have to must be good in coding and everything like that. But you enlightened so good things, and it was very impressive and very knowledgeable session. Thank you so much for your session and your kind time. Thank you. So those who don't know, Rashmi ma'am is my senior. When I was in first year MCA, ma'am was in third year. Yeah. But still, knowledge-wise, now you are my senior. You're very good. Never. This can never happen. Always experience is for something which will come. I may be expertise in one thing, but an overall mean, if you take average and mean of all experiences, you will be always ahead. Thank you. Over to you, Sandhya. Thank you. Yeah. Thank you so much, Rashmi ma'am, for these quotes. My sincere thanks to Sonalika at the last moment, though there were a lot of changes in the anchoring which was to be done. She took up this all alone, starting at the last moment. Sonalika, you have done a fabulous work, and I must say that you need to keep it up with this. In the background, there have been a lot of people who have been working. The entire core team of the students who have been working till night 2:30, 3 o'clock. And I must thank over here for the wonderful PPT which was being prepared by Sarvesh.
Sarvesh took the challenge of doing this all alone, and from yesterday till today, whatever PPTs which you might have seen, entirely done by Sarvesh. Second thing, which after giving the feedback, which you all, and I must say that you need to feel the feedback if you want your certificates and if you want to connect yourself on the LinkedIn through these certificates, okay? In the background, continuously, Chintan and Narayan, the entire credit goes for designing the certificates. Apart from that, especially to Chintan for sitting till late night and trying to work out on the fine minute parts, and he might have learned by now that it's very difficult to meet to the perfection of which ma'am always wants. That's me actually. Little bit small changes, though I was telling him, but he took immense interest in it and did it till last moment. Second and very important thing, in order to create the design the feedback, Narayan was also there, who supported. Along with Narayan, Onkar Kanade was there. The entire technical part which is there, and the recording parts, the video availability and the material and everything is being handled by Onkar Kanade, along with whom Shreya has always been a great support. I would like to mention specifically over here the 4 very important people from the MSc Part 1, Pooja, Vaishali, Muskan and Shivashri. They had handled entire slot of FY students. We don't have anybody from the FY for, as a member of the core team, but these students, they took the challenge of trying to handle someone whom they don't know. So this came up as what we call it as a big challenge for them, and plus it was for us also, because taking the people in the lobby, everybody should be logged in on time and all that. So all these things, I must say you all have done a fabulous work. Then coming to the reporting part, which was being handled by Vaishnavi and Chaitanya in the background, along with handling the entire TY lot of students. Fabulous work, and let me tell you, not a single word of the report was being edited or was being added by me or any other faculty members from the department. These students have done it on their own, and I must say big applaud for these wonderful initiative which you both have taken, and you have always proven yourself, not only at this during this workshop, but at the international level also, during the student exchange program which took place in the month of September, October. I right now can't remember it. My sincere and deepest gratitude goes to Madhav sir for sparing his valuable time for these 2 days and giving hands-on practice. At times we teach theoretical parts, but practically we miss somewhere, because we can't keep a pace with the industry industry standards which you all follow. So giving the practical aspect to the practical view to the student, that was really commendable, sir, and we are looking forward for many more associations with you in the long term to come. This was the phase 1 which we had planned, and we thought that this is something, let's try and see how far we will be able to do the justice to it. And by looking at the feedback which we are getting from yesterday, it's commendable that yes, to an extent we can say that yes, happy smileys, and we can say that yes, we have done it successfully. This entire concept would have not been possible without the support which I have always got from all the dear colleagues who are there since last 2 days continuously. In the background also, whenever I had any kind of doubt, they have been there and they have been resolving it. So my sincere thanks goes to all my dear colleagues, my head of the department for constantly being over there, and I would like to thank each and everyone, even if I might have missed someone. Please accept my apologies for that. Thank you so much. Over to you, Sonalika. Get the permission from sir. Just an announcement for the participants. Please fill the feedback form if you want the certificate. And with sir's permission, I would like to end the meeting. Okay, so even I want certificate. Where should I fill the form?
So that Nikala ma'am will be handling that part. Okay, fine. Okay, I would like to add one more thing. Since Sandhya ma'am addressed everything, the hard work which these guys have taken, I really appreciate each and every one, because these guys have shown a dynamic aspect. Because I do myself, I have done anchoring and I understand what is last minute changes. So I really appreciate this courage to handle things dynamically. And trust me, the whole slot of people who have put efforts in this, I am just a part who has just come up front and just showed you things. But the real work has done by these guys. So congratulations to you all. You all have a bright future. Keep working hard like this. And trust me, someday or the other, you will find yourself in good position, in good place, and then you will also motivate someone others to do the same. Okay, keep up the good work. Thank you so much, everyone. I would like to leave for today. Any queries, we are connected on WhatsApp. Anytime you can ping me. Whatever resources I have, I'll forward you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Kindly proceed with the recording.